Good evening, all of you. So people are just joining in, and a couple of more panelists will be joining. But in the meantime, I will introduce all of you, and we will be discussing about your exam preparation. So I thought to invite some special guests today. So yeah, first of all, I would like to thank all of the panelists for showing up on a short notice. So आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जितने भी हमारे यहाँ से टॉपर्स रहे हैं जो आज की डेट में शायद टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देखो यार हम लोग काफी टाइम से कनेक्टेड है, राइट? तो चाहे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, अनुभव सर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी है ओवर द टाइम। बट आज का जो मेजर एजेंडा है वो एजेंडा यही है कि यू कैन लिसन फ्रॉम समवन जो शायद एक साल पहले आपकी पोजीशन में थे। ठीक है, हम लोग काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, हम लोग आप लोगों को काफी बार पढ़ा चुके हैं, तो प्रोबेबली चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट probably if you will listen to these people, ठीक है, so you might probably get better insight, right? So I will introduce all of you one by one. So going from the alphabetical order, we have Akash. He is my college mate from XLI Jamshedpur. Hi Akash, can you hear me? Hi sir, hi everybody. Am I audible? Yes, you're perfectly audible. Then we have Kevin. He is again a 99 percentiler, probably a lot to listen, a lot to share. Then we have Aditi. She's in MIMS Mumbai right now. Lakshay, probably a very inspiring story of his. Someone, क्योंकि आप लोग के maximum doubts यही होते हैं 40-50 percentile. Then we moved, jumped. Then we have Sanyam. He's from NMIMS. Then we have Suhail. He is again 99 percentiler. Again, one of the most inspirational story. Then Neil has just joined us. He is currently in MDI Gurgaon. So I'm just promoting him as well, the panelist. तो देखो मुझे पता है यार आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, एंड काफी सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, एंड बिफोर दैट आज का जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें दो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे रहेंगे। सबसे पहला, वी विल लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज टॉपर्स की इन लोगों ने क्या किया था। हमारा कैट पे भी फोकस रहेगा। आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन जो मेरे पास डेली आते हैं, देन यू कैन आस्क इन योर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम कैट किस तरह से हम अलग एग्जाम्स में अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो जो आपके मेजर डाउट्स हैं। सो आई विल बी आस्किंग वन बाय वन टू ऑल ऑफ देम, एंड प्रोबेबली दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू शेयर देयर इनसाइट, राइट? एवरीवन गुड टू गो? ठीक है, तो आई एम डूइंग इट ऑल पैनलिस्ट ओनली एज ऑफ नाउ। वेलकम नील, थैंक यू सो मच। Hello sir, nice to meet you once more. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार सबसे पहले ना मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो शायद हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा इस समय ये डर लग रहा है कि 15 days आफ्टर कैट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन, राइट? एंड उसके बाद जैट एंड अदर एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन, एंड दे फील कि सिर्फ यही लोग हैं जो भूल रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, एंड समथिंग इज रॉन्ग विद देम। टॉपर्स कुछ अलग होते हैं, ठीक है? सो यू ऑल आर सिटिंग फ्रॉम द टॉप एमबीए कॉलेजेस, ठीक है? प्रोबब्ली वन बाय वन वुड यू लाइक टू शेयर इन अ वेरी स्मॉल शॉर्ट लाइन, ठीक है, कि were you exactly in the same space 1 year before? Starting with probably Akash, Kevin, anyone who wants to share the first insight. Sure, I think I can take this one. So obviously, I totally agree. Mocks के score काफी fluctuate होते हैं, चीजें थोड़ी एक दिन आपके मॉक्स बहुत अच्छे जाते हैं, आप 3 दिन बाद दूसरा मॉक देते हो, वहाँ पे स्कोर बिल्कुल ही काफी नीचे आ जाता है। बट एट द सेम टाइम मेरी अप्रोच हमेशा से ये थी, फॉर मी मॉक इज अ नेट प्रैक्टिस। यू कैन लाइक आप नेट प्रैक्टिस में खराब परफॉर्म कर सकते हो, बट दैट इज द मेन मोटिव ऑफ नेट प्रैक्टिस, राइट? ताकि आप डी डे पे अपने मैच डे पे अच्छा परफॉर्म करके आओ। तो एक नेट प्रैक्टिस खराब जा रही है उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक मॉक खराब जा रहा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट गो फॉर द लॉन्ग टर्म गेम, just go with this mindset that you have to perform well on the D-Day, and at the end of the day, that's what matters. So well, what would you like to say? मतलब आपका शायद वही सिचुएशन था, एक साल आप ड्रॉप करके आए थे, स्कोर्ड अ लेस परसेंटाइल, मॉक्स में स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा था, एंड देन गेटिंग दैट 99 बेंचमार्क. What would you like to share with them?
Hello, everyone. So it's a very great to see you, sir, again, all of you. And I'm so sorry, Suhail. Just a second. मतलब I would like to tell all of you, ठीक है, हम लोगों के लाइफ में इतने challenges आते हैं, but probably he is one of the guys जिसने मतलब जिसको देख के ना एक inspiration जब draw करनी होती है तो probably I also see his videos. So he hails from Jammu जहाँ पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, and from that situation he is मतलब just imagine आज की डेट में आप मतलब वो MPPS वाला डेटा होता था, मतलब नॉट इवन 3G और 4G, वो 2G पे वीडियोस डाउनलोड करके पढ़ना and then converting and getting that score. So over to you. That's very kind of you, sir. All I'll say is कि score fluctuate सबका होता है. आपकी लाइन है कि mock is the part of your preparation, not the result of your preparation. So अगर आपका mock में fluctuation भी हो रहा है, it's not a reason for you to worry. Ultimately, what matters is your performance on the D-Day. Have faith in yourself, remain a little bit calm, and I'm sure it will click for you. For me, it was my second try, and I understand कि आप लोगों पे भी pressure होगा. Definitely, that's going to be there. But just focus. This is the last part of your preparation. Keep your focus, and I'm sure you will be able to crack it. Nothing like that. Great. Kevin, again, the same story, dropping 1 year, then getting that 99 benchmark. What would you like to suggest to them? As both of them are saying, yeah, you're gonna have fluctuating scores. So, you know, you got to keep up with it and not feel disheartened and keep pushing yourself. So it is the net practice. So your main game is yet to come, and let's hope that you all come out with flying colors. So yeah, keep going ahead. Don't be disheartened and keep pushing yourselves. यार मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, and this question primarily goes to Lakshya, Aditi and Sanyam. We take so much pressure of CAT, ठीक है, and then we leave every other exam, ठीक है, and you guys are sitting in top colleges apart from CAT exam, ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा ना कि CAT के बाद to keep yourself motivated as well, ठीक है, CAT हमारा जैसा भी जाएगा 15 days बाद probably CAT exam होने वाला है, but still like what is that key motivation after, let's say you see let's say score in mocks, what motivated you? So I would like to take this one. Good evening, everyone. I saw a lot of messages that they know me. I've been here before, but हाँ मैं इस बारे में बात करूँगा. Like this was my second attempt, which I converted IFT. In my first attempt, I did appear for all the exams, excluding IFT. So what happened was it was a COVID year, and IFT was scheduled in Feb. So tab tak we had our scores of CAT and MathSnap. I'm talking about year 2020, 2 years back. And I gave up on IFT. I thought that मैं अगले साल सारे exams दूंगा, and I gave up on IFT in my first attempt. And in the second year of my, second attempt, I fortunately scored good marks in all the exams, and I converted IFT. And IFT was my first attempt, to be honest. And so यही message है जैसे कि do not give up on any exam. You know, you will be having a lot of chances. Just go with the flow and give your best in all the exams. I mean, you never know कब क्या सही होता है, कब क्या गलत हो जाता है. कोई exams जो आप expect नहीं भी कर रहे. I was not expecting this good score in IFT that I'll convert in the first list. So, and yeah, so do not give up on any exam. Just go with it. अभी काफी 2-3 महीने की बहुत लंबी रेस है और उसके बाद भी रेस है. Just give your best in all the exams and don't keep your mind to any particular exam. No, मतलब अगर CAT हो गया अच्छा हुआ, अगर आपका बहुत अच्छी बात है. 5 दिन बाद IFT होगा, उसमें भी अपना बेस्ट दो, स्नैप होगा, NMAT होगा. जितना दे सकते हो और अपना बेस्ट दो. बाकी जितना अच्छा पूल ऑफ जितना अच्छा पूल है आपके पास इंस्टीट्यूट्स का, it's your choice. Go with the best. And same thing with Sanyam and Aditi. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार, and this is one of the issues which I have seen with students, कि हम सिर्फ CAT देंगे, हम ZAT नहीं देंगे, या फिर हम सिर्फ NMAT देंगे, कोई और अदर एग्जाम नहीं देंगे. So what was your strategy CAT के साथ to balance NMAT, or probably what is that motivation? क्योंकि सबको लगता है NMAT में कुछ अलग होना है, CAT में कुछ अलग है, ZAT में कुछ अलग है, but what is your perspective on this? Okay, so I would like to take this up, that it is one day game. You never know what will happen. So it's better if you take more and more chances. Maybe someday your luck works. So
don't consider that these all exams I will give, all are aptitude exams, more or less all are same. So it's fine if you take several chances and convert one of those. Don't be rigid. You can't be rigid in this because you never know what will happen. Sayam? So I think for me it was more about believing in oneself. Like I attempted NMET in 2020. So I gave NMET for prior to CAT and then after CAT. So for me it was like a 3-month long marathon. Like 3 months we have to attempt as many tests as possible, because at that time I think Snap also has multiple attempts. So it was more like an urge to join college. Like it was my second attempt. So I think an inner hunger to join a top B school and like to see what is waiting ahead is more important than like having anxiety and other misconception at this time. So be motivated about thinking like another enriching 2 years are waiting for you in a top B schools of India. So I think that's what I followed during my attempt. Okay. Neil Kamal, how did you fill the MDI form first? Because I guess MDI and SP Gen ke to aise forms are which you have to fill before CAT. So were you sure about your mock scores कि मुझे fill करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने form fill नहीं किया ये, right? So like how were your mock scores probably? Were you sure or were you taking chances on all the exams or how was it? सर मेरा ये था कि लाइक शॉर्ट तो सारे कॉलेज का देना है, बट एसपी जैन का मैं फॉर्म भरना भूल गया था, बट एमडीआई का मैंने पहले ही भर दिया था। और उसके अलावा जैसे कि पता था कि लाइक अदर कॉलेजेस कुछ में आईएमटी का एक्सटेंशन मिलता है बाद में, तो वो सब मैंने नहीं भरा था। और उसके बाद मैंने आईएफटी भरा था, अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसके बाद स्नैप में भी ठीक थे, बट इससे में चार्डी सबका कॉल था, तो फिर मतलब उसमें कुछ था नहीं, फिर फाइनली मैंने एमडीआई ज्वाइन किया। तो बस ये था कि सर जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं आपने बताया, और लाइक नेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन था सब भरना है, और एमडीआई मैंने भर दिया। और अभी लाइक अभी तो मैं एमडीआई का मैंने आईबी कोर्स ज्वाइन किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे अच्छे से भी। चलो, good to hear that. Yugal, your story. What would you like to tell? Yeah, hello, am I audible? Yes, you're perfectly audible, Yugal. Yeah, sorry, I've joined from phone. So my view about this, about exam, like I'm actually from IIM Rohtak. So I feel like my whole journey was for 1 year, my 1 year of whole preparation. And I actually gave all the exams, IFT, XAT, CAT, and everything. So my aim was that I should just join a top B school. And that was only my aim. I cracked IFT. I got IFT Kolkata call. Okay. Sorry. I think there's some internet problem. So Okay. my just main aim was that I should actually join a top B school. After giving CAT also, I didn't lose motivation. It was just that I wanted to give all my exams nicely and just wait for the best result which I would get, and then work upon the interviews and everything. Okay, good to hear. So I will just come back to you. And lot of students are able to recognize your Yugal because he has recorded a lot of assignment analysis videos, and a lot of students who see the video analysis of LRDA puzzles. He's the one behind that. Meanwhile, Aditya has also joined. Okay, so Aditya is currently in IIM Bangalore. You might have seen in a lot of videos currently, and he has been last year 99.92 percentiler. So Aditya, over to you. Like last 15 days, everyone is nervous. Were you as well, or what is the one suggestion you would like to give them? Yes, sir. So definitely everyone is nervous. As I was also very nervous during the exam season. So I gave all the exams, and it is like you have to see what the life is beyond those exams and focus on that. So just it is a very good life in a B school. So just focus on that and crack all the exams. So I believe everyone is well prepared by now. And it's just about the exam stress and handling the pressure on that day. यार मेरा ना आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आदित्य थोड़ा सा एक बार वॉल्यूम का भी आप देखना, आई गेस वो थोड़ा हेडफोन्स का है, बट वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि नाउ वी आर लेफ्ट विद 15 डेज, सो दीज ऑल स्टूडेंट्स हैव डन 30 डेज का वर्कशॉप, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, एंड वो एक मोमेंट होता है ना कि वो एक मॉक में कम स्कोर आता है एंड देन यू लूज एवरीथिंग कि मेरा होगा ही नहीं, मैं कैट पे गिव अप कर रहा हूँ, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स गिविंग अप ऑन कैट कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कैट सर मेरे से होगा ही नहीं, मतलब दे आर इन ए स्टेट ऑफ सेल्फ रिजेक्टिंग.
ठीक है, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मतलब डिस्पाइट प्रिपेयरिंग सो हार्ड एक मॉक के स्कोर से फर्क पड़ रहा है, मतलब आई हैव टॉट देम सो मेनी टाइम्स बट आई डोंट नो व्हाट मोटिवेशन दे आर लुकिंग फॉर. सो व्हाट वाज योर थिंग, क्योंकि ये आपके साथ हुआ होगा केविन, बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, सुहेल के साथ, आदित्य के साथ, आकाश, लक्ष्य, कि यार वो मॉक हम दे रहे हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, वो परसेंटाइल 70 आ गया ना, व्हाट टू डू. एंड दिस इज अ लेजिट क्वेश्चन राइट, एज ए एस्पिरेंट इफ आई थिंक, मुझे लगेगा मैं एक साल कर क्या रहा था, मतलब मैं अभी भी 70 पे ही हूँ, मैं अभी भी वो वर्बल में स्कोर नहीं कर पा रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी मेरे सामने वो चैलेंज है कि मैं LRDA में पिक ही नहीं कर पाता सेट, कभी 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 मैं 4 सेट सॉल्व कर दूंगा, कभी मैं एक भी नहीं कर पाता. तो इससे डील करें कैसे, मतलब व्हाट शुड बी द आइडिया, मतलब लाइक थिंक फ्रॉम एस्पिरेंट बिकॉज यू हैव बीन इन दैट पोजीशन, व्हाट शुड आई डू एज एन एस्पिरेंट नाउ. नहीं आ रहा स्कोर, मैंने प्रिपेयर भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, सर ने मुझे बोला रिवीजन कर लो, वो भी कर लिया, मॉक्स भी लगा लिए, वर्कशॉप सारी अटेंड कर ली, अब भी नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं. Anyone who would like to share, मतलब this is a legit, because I see all the chat right, all the time when student talking, and उनका मुझे भी क्वेश्चन समझ आता है, मैं भी ये बोलता हूँ, अब मैं भी क्या बताऊं, मतलब what next. So मतलब how to handle yourself in those last 15 days now. Kevin, what would you like to say? Totally right, sir. I mean, I still remember there was this day right after the workshop. So you cannot afford, I mean, you know, काफी आपका motivation down हो जाता है when you see low scores in mocks. ये 15 दिन में. I still remember I woke up at 6 a.m. सुबह mock लगाया मैंने, and I scored somewhere around 60 percentile in that mock. I remember it was around 20th November or something. तो but I knew कि मैंने कुछ गलतियां करी है, और शाम को I thought मैं शाम को एक और मॉक दूंगा. I slept, थोड़ा सा आराम करा, शाम को एक और मॉक दिया, and I scored somewhere around 99, 98.7, somewhere around that. तो इतनी मेहनत करने के बाद, you know, these guys must have been taking classes since 5-6 months minimum, I think 4 months. तो सारे कॉन्सेप्ट्स, वर्कशॉप के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होते हैं. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू पिक दोस क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू, यू नो, चूज द राइट क्वेश्चंस और सेट्स. सो माय मैसेज वुड बी, डू नॉट सेल्फ रिजेक्ट, जैसा आपने कहा सर, सेल्फ रिजेक्शन मत करो. लेट देम रिजेक्ट यू ईदर इन पेपर और इन द इंटरव्यू और नॉट. सो सेल्फ रिजेक्शन मत करो. यू नेवर नो कौन सी चीज आपको कब, यू नो, आपके फेवर में आ जाए. आपने एक ऐसा सेट पिक करा टेस्ट में जो, यू नो, यू स्कोर्ड इन दैट, और किसी लोग नहीं कर पाए. तो डोंट गिव अप ऑन दिस. आई नो काफी मुश्किल होता है लास्ट 10-15 दिन में अगर आपका मॉक का स्कोर वो ना आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डू नॉट गिव अप ऑन दिस. लगाते रहो, करते रहो मॉक का. अलॉट, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था जब यू ऑल जॉइंड एज पैनलिस्ट. डू नॉट गिव अप, यू नो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं अपना. तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, मेहनत करते रहो एंड रुको मत. बस अभी तो 15 दिन यही है. सो या, What is your take, Kevin, on this? What would you like to tell? हो रहा है Yeah. ऐसा लास्ट के 10 days में मॉक स्ट्रगल, स्कोर्स नहीं आ रहे हैं. Yep, that's what I wanted to say, my own experience. So it was with the LRDI section. So I scored a 70 percentile in my mocks, and it was in the last 5 days. So scoring a 70, you know, just 5 days before the exam is kind of more than rejection. It's really demotivating. But the point is, you know, you keep up to it, and I saw where I went wrong. I started to check on what are the mistakes I did, and then, you know, started to course correct, even though it was the last 5 days. So it's about keeping up to it, and on the day, like Lakshay said, let them reject you. You do not reject yourself. So you pick up the right sets and choose your questions wisely, because the mistake that I did was I was picking up the wrong sets. So it does happen. The last 10 days, yes, I did score very low percentiles, and it's really difficult and disheartening. But the thing is, on the day, you know, you just ensure that you pick up the right sets and keep up to it, and let's all hope God is there with you. So yeah. Aditya, what is your take on this? Audio clear है? Comparatively better. तो वही, I mean, the point is that what Lakshay mentioned is never reject yourself. So this will help us in the B school as well. So there are a lot of situations when you are like, I cannot do this, how will I handle this? So just don't reject yourself and carry on with your preparation. I think everyone is well prepared. So it's just about being confident on the final day and cracking it. That is a reality, because before joining a MBA myself,
I talked to a lot of my friends and everyone suggested कि हो नहीं सकता, मतलब like to balance both the things is next to impossible, but you just have to push yourself, right? So that is what is important. Suhail, what is your take? Like you got 99, but I remember talking to you जब आपका स्कोर वही फ्लक्चुएट हो रहा था 70s 60s 80s में जा रहा है, नहीं आ रहे नंबर, वो कैसे रखे मोटिवेशन? बिकॉज यार देखो हम बोल कितना भी लें कि नहीं यार जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, एनालिसिस करो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? वी आर नॉट मशीन. तो वो इम्पैक्ट तो करता ही है माइंड पे, राइट? सो हाउ टू डील विद दैट? ओके सर, फर्स्ट पॉइंट इज जब भी ऐसा कुछ होगा आपके मॉक्स में परसेंटाइल्स स्पेशली एट द एंड लो आने लगेंगे, जस्ट लुक बैक ऑन द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. एट द टाइम आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि LRDI कैसे होता है, QA कैसे होता है, बट जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस दैट यू मेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स टू गेटिंग टिल दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. How many hours and hours, how many classes you put in, how many mocks you gave. At no point did you give up till this day. तभी तो आप इस सेशन में हैं. So if you haven't given up till this point, why will you give up right at the end? That's the theoretical aspect. And what you should do after such a mock, give yourself a 1 day or a 2 day break. Last के हफ्ते में you should not be attempting too many mocks because you should just keep yourself fresh. Revise करो, take a 1 day break or a 2 day break from any mocks, and that will help you to bounce back, later on. And then I have one question from Akash and Kevin specifically. First I will go with Akash. यार हमारे यहाँ बच्चे ZAT का फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं. They are like CAT से भी डिफिकल्ट है, हमसे ZAT तो होगा ही नहीं. And this is a common notion which I have seen. सर ZAT नहीं फिल कर रहे, इसके अलावा हम CAT कर देंगे, we will go with other exam, बस ZAT तो करना ही नहीं है. Because that is what we have heard कि even more difficult than CAT. What is difficult in that, right? So as a student you can tell more, right? CAT और ZAT में क्या इतना difficulty है, and should they go for it or not? मतलब इतना खौफ क्यों है इस एग्जाम का? I think I'll again go with a cricket example because sorry अगर यहाँ पे cricket fans ज़्यादा नहीं है, but again it's like you have to be clear with your basics and the format just changes. So if you practice mocks, you are ready for that format, right? And talking about the difficulty level, हर exam का एक अलग difficulty level होता है, but that is for all the aspirants, right? So if your basics are correct, if you're doing the right things on the D-day, things will fall into place, right? So just and at the same time mocks भी इसीलिए होते हैं कि you practice for that exam, आप उस exam के लिए prepare हो. So if there's a new section in any of the exams, you just practice the mocks, see what kind of questions are coming, what is the difficulty level of those questions, and go forward from that aspect. And again quoting the same thing which other panelists said, फॉर्म सारे भरो यार, क्योंकि यू डोंट नो किस दिन आपका लक आप चलेगा. आपने प्रेप किया होगा, बट देयर आर फ्यू डेज मे बी आप कैट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, मे बी आप IFT में अच्छा परफॉर्म ना कराओ, बट फॉर्म सारे भरो. एंड अगर आपने सब में अच्छा परफॉर्म किया, यू हैव दैट चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, तो इट्स अगेन बेटर, राइट? सो दैट्स माय टू टेक ऑन दिस. And Kevin, same thing to you. मतलब SP Jain का जब हम फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, is there something specific student need to keep in mind because they are having a lot of question कि कैसे मतलब इस एग्जाम के लिए या इस फॉर्म को स्पेसिफिकली फिल करें? Because when you talk about SP Jain, they give a lot of weightage to the profile, right? So how to tackle that thing? Anything? Because I guess उसका last day हमारा आने वाला है. So what should we follow in that? Yes, so SP Jain does give a lot of weightage to the form filling part because they do, review your application forms in detail. So yeah, the thing is when you fill that form, you get a new perspective of how to frame your answers, how you think about yourself, and a lot of other things. So the point is, like the others are saying, fill all forms. And filling SP Jain ka form, it has two different forms. There's a form A and a form B. So once you start filling it, you get a different perspective of yourself, and it gives you a confidence so that even if in the interview they ask the same questions, you already know the answers to it. So the point is, yes, do go ahead and fill it. It'll boost your confidence and it'll help you understand your overall profile. So, it's a good thing to fill it up. Also fill in other forms as well, because as you said, as the others said, you don't know when you get lucky. So you just hope for the best. And same thing, Aditya and Sanyam, because NMAT का exam adaptive हो गया, right? And a lot of, like most of our students are going for NMAT. So is there any specific they want to keep in mind? Like for particularly NMAT, what is different particularly from CAT or let's say other exams
which they should keep in mind? And what is a safe score? So first of all, not in math specifically, I want to point out one thing, that start bookmarking your mock questions. Whichever questions you feel that you need to come again, start bookmarking it now, so that in the last 2 to 3 days, at least you can go through them once. Because that is one thing that is very important, in spite of going through basic questions that are in your booklets or somewhere. So that's one thing. And for NMAT specifically, start targeting the questions that are not in the CAT. For example, that's all the questions of you have to arrange all the things, or maybe the different questions from CAT. Those are very scoring also, and easy, to be honest. So start focusing on them rather than the parts that you are weak in. Okay. And Sanyam, I remember you scored well both in CAT and NMAT, right? So how Yeah. did you manage both the things? I think the main difference between CAT and NMAT is all about speed and pattern. Like for at our time, it was adaptive was the first time it was introduced, NMAT, and it is not like if you're getting 34 questions, then you need to invest 1.5 minutes on each question. So it's like you invest 20-30 seconds on initial questions, then after you get more difficult questions, then you save time. The time you initially saved for those questions, invested in the later part of questions. So I think the major part is to time management in the NMAT. Like questions are not that difficult as compared to CAT, SAT, and IFT. They are solvable, but it's all about like how you're managing the initial questions. Because once you start losing those initial questions, then your score will automatically get low. Because as you pass the number of questions in the NMAT, your score gets exponentially increased in number of time, like 1.2, 1.5x. It's not like each question is weighted equal number of marks. So every question is weighted different number of marks. So I think that's the main difference between CAT and NMAT. And for me, I took many mocks for NMAT. Like I only prepared questions from those mocks only, because at that time I remember I didn't have much time because my job was also going on. So I took only in last 20-30 days, I only appeared for mocks for NMAT and then prepared questions from there only. And the question bank that Saurabh must have given you in the portal about NMAT. Great, Sayam. And before taking the next question, and I will leave it to audience then, but one thing I would like to ask, like they seek on motivation and you guys are sitting in the top of the B schools, right? How is your experience in the last 1 year? Like probably this is the biggest inspiration or motivation anyone can seek for. Because मैं हमेशा बोलता हूँ यार, वो 30 लाख या 40 लाख पैकेज के पीछे मत जाओ. वो जो आपका डे नाइट का हसल है ना, जब आप सो नहीं रहे हो, ठीक है. एंड आई हैव डिफरेंट केस ऑल टुगेदर कि मैं रात को क्लास ले रहा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा. बट एज अ स्टूडेंट फ्रॉम योर एंड, how has been the journey, like from IIM Bangalore to MDI to SV Jain, NMIMS, XLI? What is that one thing like which you are loving about your life in the last 1 year? I know there are a lot of things which you might be hating as of now, but what is that one thing you are absolutely loving about your life in the last 1 year? Just to inspire all of these students. Anyone can take it. So One I minute. just want to start like currently I'm in MDI Gurgaon. Like I'm doing the PGDM IB course. So just a brief introduction about this course. This is a dual degree program. One PGDM from MDI Gurgaon and one Masters in Management from ESCP Europe. So on December 28th, I'm going to Paris for my Masters in Management. So like my journey is completely different. In last week, yesterday only my examination midterm got completed. 11 subject, 5 days, complete rigorous. But what happened, like after Sunday, giving 2 papers, we all came, did party, and today also like most of us missed the class. And this is like MDI life. So MBA life. So you enjoy, you study hard. Like today also at 12 o'clock, I have to submit one simulation. So this is the whole thing, rigorous, but you enjoy. And the whole thing is like you are achieving something, you have goal in mind, and you can like you will get something big. Package is a different thing, but there is also very good learning experience. What you are getting from here, your peers, like there you will find lot of people coming from different background. You can learn from them, your teachers, professors, and everything. So for me, like it's completely a different experience. I'm just waiting to go to Paris on 28th. Okay, that is another motivation altogether. Aditya, what is the thing which is keeping you? Life is actually really good in a B school, so it is hectic. Yeah, I agree, it is very hectic. There are a lot of submissions and exams and the whole internship process, but at the end there are a lot of people who are going through it with you, and everyone just enjoys the process.
there is a lot of exposure as well. We have a lot of talks from greats in the industry. Like, for example, today we had a talk from Nikhil Kamath, the co-founder of Zerodha. So there is a lot of exposure and a lot of fun as well. Just work hard and there are a lot of parties that you can enjoy as well. So it is a really good experience. So देखो जितने भी लोग तुम्हें यहाँ पे बता रहे हैं ना पार्टीज का, इनको पता नहीं है भी, मतलब लाइक जस्ट टू गिव अ रियलिटी चेक, दे आर टेलिंग यू द बेस्ट थिंग, बट उस एक पार्टी के लिए ना आई डोंट नो हाउ मेनी सबमिशन दे आर मेकिंग, हाउ मेनी प्रोजेक्ट दे आर डूइंग, कितने मिड टर्म्स खत्म करके आए हैं, बिकॉज मैं एक्सलाई में हूँ तो मैं आकाश के साथ रिलेट कर सकता हूँ कि 3 दिन का भी हमारा फेस्ट हुआ, उससे पहले क्या क्या करके आए हम लोग. राइट आकाश, व्हाट इज द वन थिंग यू आर लविंग अपार्ट फ्रॉम ईवी? EV was fun. Just same things, adding on the points of Aditya and Neil. Obviously, peer group, one thing. तुम्हारे साथ जो दोस्त हैं तुम्हारे बैठे होंगे, वो तुम्हें लगेगा कि तुम सबसे खराब प्रोफाइल हो, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ अच्छा करके आया है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट योर peer group. And quoting the same thing again, in MBA colleges, we work hard, but we party harder. So that is one common thing. Okay, so that is a common motivation. If you want to do a lot of parties, go to a top MBA college. Kevin, do you agree with that? Yes, so I am in Mumbai. So as it is, you work hard, you keep partying harder. So yeah, so now though I have 3 to 4 quizzes on a daily basis apart from the midterms. So yeah, we study during the day and party during the night. Adding to it, like Aditya was telling, you get to meet a lot of greats from the industries and listen to them. So that is an added advantage. And you get to listen to really wonderful professors take, very unique classes. So that is also there. Adding to it, you also have a lot of non-classroom learning. So that too, you get a different taste of it. So yeah, guys, you guys will enjoy it when you get there. Lakshay. So sir, my biggest motivation was sitting on this side. I mean, talking to all the students. But yes, as everyone mentioned, parties and having a good time. But yes, the biggest motivation is it should be बस आना है किसी top B school में, you get to understand a lot of things. I mean, meeting people from industries and personally आपकी personal development इतनी ज़्यादा होती है, like I've been in constant touch with Anubhav sir, Saurabh sir से भी बात होती रहती है, I keep on watching the status. Salim Suleiman were there yesterday. So, मतलब, you get to have all of these things and at the same time पढ़ाई, but yes, your personal growth, your personal development बहुत ज़्यादा होती है, it's been just 4 to 5 months since we have all joined our respective B schools, but your motivation should be to sit on this side, on this end, and motivate the students. So yeah, that was just my motivation. Any add-on, Suhail? Once you enter into a top B school, the opportunities that you get, I mean, there'll be people from, like recently there was one of the senior World Bank economists who got to meet and interact with. I got to meet and interact with the Chief Minister of Haryana. So these opportunities you will only get once you crack into the top B schools. So make sure that if you want to crack into these opportunities, do crack the exam, give it your best. I'm sure you'll make it through. Just add on to Suhail's point. So when you enter a B school, there's a plethora of case competitions that you enter into. So I'll tell my experience. So this year we won national case comp for L'Oreal, and then for internationals, our team from NMIMS went to Singapore to take part on it, and there we got a chance to meet senior leadership from the Paris team, from the Singapore team, from the Indonesia team. So it's like a lifetime experience that you will have. Like not every student in your college or in India will have a chance to interact with the senior leadership of a global MNC, and that too on international level. So I think whenever you get nervous or seeing what low marks, so you should try remembering these things, that after entering a B school, you will get to experience these things. Yugal, anything? Yes, sir. Sir, my experience in the college is that the main motive for me is that like I actually get to interact a lot of people. Like here we are having a batch size of
240. So every day we are meeting a new person. We are actually gaining a lot of knowledge while we are actually interacting with others. Apart from the classes, your quizzes, and all the assignments, the connections which I make and the learnings which I get through by interacting with them, because they will also be they are also from different background. When they are so they'll be actually telling some things which you might not know. Your actually learning gets very much enhanced when you actually talk to your peers, your colleagues. So that is one thing which I actually cherished a lot being at the college. Aditi? It's great, obviously, all the things there, but I personally feel that you will find something new about yourself each day. Like, okay, this is also what I can do. Okay, this is also I want to learn. So that is the best part, I feel. You parties and fun, friends, people, everything will be there, but you as a person will have something new about yourself every day. So if I give you a summary of whatever they have said, and then you can just ask your questions. See, what I can categorize into, right? And a lot of people have asked me as well that why joining MBA so late. So I always answer them one thing, that it was never the question about why, it was always the question about when. So that was my journey. But all in all, if I summarize, right? So I will say one thing: parties ho jayengi. And all the guys you are seeing here right now, they all have probably got a very great internship. They all are placed, and probably they will get a top package as well. But apart from that, you know, when you are sitting in a class of, let's say, 100 student, 200 student, और हर एक इंसान 2-2 साल का भी work ex लेके आया ना, तो you are sitting in a group of 200 years of experience, which you will never get, right, anywhere else. The professors who are teaching you, probably all the professors, if you count, they might be having 400, 500 years of experience, right? If you see the, you know, staff, your seniors, your alum network, so you are having thousands of years of experience from which you will learn. The thought process you are going to develop is going to change your journey, and the kind of network you are going to develop, this network is going to stay with you forever your life, right? So आज के में यही है कि that your network is the net worth. तो देखो, इतने टॉप कॉलेज में जाना है तो एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा. स्कोर्स कम भी होंगे, हाईज भी होंगे, लोज भी होंगे, वो सब चीजें चलती रहेंगी. बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दैट यू कंटिन्यू द जर्नी विच यू हैव स्टार्टेड, राइट? यू कैन नेवर रीच टू द एंड पॉइंट इफ यू स्टॉप इन बिटवीन. हाँ, ये हो सकता है लेट पहुंचोगे, हो सकता है एक एग्जाम में नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, बट हो जाएगा, ठीक है. वो हाईज भी आएंगे, वो लोज भी आएंगे, वो कम मार्क्स भी दिखेंगे, और वो अच्छे मार्क्स पे एक्साइटमेंट भी होगी. वो जब एक बार 99 मॉक में देखेगा 98, तो तुम्हें लगेगा तुम ही हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है. बट ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट यू अंडरस्टैंड दैट तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बेस्ट है. These guys who are sitting with you, and the only reason I wanted all of you to connect with all of you, that they are not different from you. मतलब they are one of you only, right? इन्होंने भी लास्ट ईयर ऐसे ही सोचा था, होगा नहीं होगा, and now they have got that dream percentile. Now they are living that dream journey which you want to enter into. तो वो जब तक अचीव नहीं होता ना, तब तक इम्पॉसिबल लगता है. एक बार वहां पहुंच जाता है ना, फिर आपको नेक्स्ट इम्पॉसिबल दिखने लगता है. अब वो मुझे बेस्ट SIP लेना है, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है. यहाँ से मुझे बेस्ट पैकेज लेना है, मुझे अपना ग्रेड 6+ लेके चलना है, वो चैलेंजेस आएंगे, और वो जर्नी चलती रहेगी. मतलब वो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि जो आपने मेहनत करी है ना, वो आपको रिजल्ट देगा. मतलब वो देगा आज नहीं तो कल दूसरे एग्जाम में देगा, ठीक है. सो बहुत सिंपल, मेरी लाइफ का बहुत सिंपल सा फंडा है, व्हेनेवर आई ट्राई एनीथिंग न्यू, कि अगर मैं ट्राई करूंगा तो शायद मैं अचीव कर लूंगा, और ट्राई नहीं करूंगा तो डेफिनेटली अचीव नहीं करूंगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर, राइट? सो दैट इज a basic just I wanted all of you to listen the MBA journey. Now I will be taking questions of yours, audience. You can just type, and So, then So just 3 specific points I'll mention before we actually close our panel discussion. सबसे पहला, please go through your previous mocks and see कि किन LRDI sets में you are making mistakes and किन LRDI sets में आप अच्छा कर रहे हैं. That is actually very important for your set selection when you actually sit in LRDI. That's one. Second, हर एक section में ensure that you do clear the sectional cutoff. Sectional cutoff would ideally mean 6 to 7 questions, roughly speaking. Make sure that at least you ensure you clear the sectional cutoff. Lastly, there's a poem recited by Amitabh Bachchan ji, and the name of the poem is कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक बार YouTube पे जाके, whenever you have that demotivating mock next time, do go on YouTube and see it once. I'm sure it will help you. Thank you. All the best.
ग्रेट, नाउ इट्स ऑल योर्स। क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं? देखो मैं ना बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू पे डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। वी विल हैव अ डिफरेंट पैनल डिस्कशन व्हेन द इंटरव्यू टाइम विल कम। अभी प्रोफाइल के ऊपर कोई डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है, बिकॉज वॉट एवर यू हैव स्कोर्ड लाइक इन योर 10th, इन योर 12th, इन योर ग्रेजुएशन इज वॉट एवर यू हैव स्कोर्ड, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट, राइट? अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर होना चाहिए, और उन एग्जाम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है वो होना चाहिए, चाहे वो कैट हो या डिफरेंट एग्जाम हो। So let's try to stick the conversation to that so that you all can get the valuable insights. And once this panel discussion will get over, we will get into the session where I will be sharing more things with you. And because these all are very busy students, right? Very busy. I know, I'm sure that you guys have joined on a very short notice, but I'm pretty much sure अभी ये meeting end करने के बाद कोई ना कोई submission pending होगा, ठीक है? कोई ना कोई meetings lined up होगी. But let's quickly take the important questions, ठीक है? तो एक एक करके लेट्स सी। इसको ना पहले एक कैटेगराइज और कर देते हैं। सबसे पहला वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स, ये 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूं, एनीवन हु वुड लाइक टू पिक? आई गेस केविन, you scored wonderful in verbal RC, right? If I remember it well. People have scored good percentile in LRDI. अभी हमें वर्बल में लेके अगर हम एक एक सेक्शन की बात करें, क्योंकि लेट्स कीप इट लिटिल स्ट्रक्चर्ड, कि अभी मुझे वर्बल के लिए क्या इनसाइट्स है, मतलब एवरीवन हु हैज स्कोर्ड एंड यू थिंक दैट हम वर्बल मेरा अच्छा है, क्योंकि वर्बल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो, राइट, कि कहाँ पे स्कोर ऊपर नीचे जा रहा है। तो पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट वर्बल आरसीज, कैसे मैं आरसी पिक करूं, मैं नॉन आरसी क्वेश्चंस को कैसे डील करूं, एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल मेरी वर्बल की स्ट्रेटजी इस समय क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल हैव स्कोर्ड ग्रेट परसेंटाइल, तो तुम सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी रही होगी जो इन सबको शायद एक इनपुट दे देगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि व्हाट पर्टिकुलरली let's discuss the verbal, then LRD, and then we will move to quants. So yes, I'll take it for the verbal part. The thing is, you need to keep practicing. You need to keep practicing RCs of different topics from different sources, and you need to keep doing it on a regular basis. And it will also be good, you know, if you read newspapers, because apart from adding to your verbal skills, it will also help you in your interviews. So the point is, you go through a lot of different articles and you practice a lot of different RCs. You get a rough idea. So when it comes in the paper, the actual exam, it'll be something that you're used to. It won't be something very new. So some topics you will be familiar with, but what happens is during the exam, the topic that you're familiar with might have a very difficult RC. So it is good to choose topics on which you're very familiar with, but also keep it in mind that it might be difficult. So, you know, have a second strategy in hand as well of looking, you know, skimming through all topics that are there in the exam. So yeah, pick your questions wisely. And apart from the non-RC topics, all the sentence formation and your grammatical errors, you know, it comes out of practice. So do try all those questions and give it your best shot. Aditya, what was your verbal thing? How did you proceed? Then we can hear from others. So verbal was actually my weakest section. So mostly it was like keep on reading new articles in new domains so that in the exam you are not new to a domain that is coming in the questions. Apart from that, it is just practicing more and more RCs and going for accuracy rather than more attempts, because negative marks is the worst thing that can happen in the exam. So just focus on accuracy and keep practicing different types of topics that can come. Aditya and Sanyam, I would like to ask, जैसे NMAT का verbal is completely different, right? If in case you are there, उसके लिए हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? Because simultaneous बहुत सारे ऐसे बच्चे जो CAT के साथ साथ अपना एग्जाम देने वाले हैं NMAT का, या for that matter SNAP का, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या वर्बल के लिए आपने कुछ अलग किया, मतलब लाइक, क्योंकि वहां पे शायद वोकैबुलरी डोमिनेटेड है व्हेन यू टॉक अबाउट NMAT, CAT में RC डोमिनेटेड है, सो व्हाट शुड वी डू फॉर दैट थिंग? So I think when I gave the NMAT, it was more about the critical reasoning part was very much there in verbal part. So RC was pretty easy. The small topics of English, grammars, fill in the blanks, those synonyms, antonyms, the analogies were quite like 2-3 questions were there for analogy. And apart from the critical reasoning, what was the major part? Like I still remember there were 8-9 questions of critical reasoning. Like there was statement, popular syllogisms, they were very questions. So I think you need not to prepare much about RCs for NMAT. It's about the most granular and smaller topic that you have to prepare for NMAT verbal part. Okay. And any idea about
अच्छा एक चीज है, जैसे हम लोग पेपर कर रहे हैं तो डिड यू गाइस, जब हम आरसी कर रहे हैं तो यू यूज टू रीड आरसी फर्स्ट देन सी द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन क्लास करके फिर हम आरसी रीड कर रहे हैं? बिकॉज आरसी एक ऐसा सेक्शन रहा है जो मैंने ओवर द ईयर देखा है स्टूडेंट्स, एंड शायद आपके साथ भी रहा होगा, वो 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। मतलब एलआरडीए में आ जाएगा, मेरे को क्वांट्स में आ जाएगा एक बार सेट सॉल्व हो गया तो, बट वो वर्बल में कैसे उसको एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सर्टेनिटी अचीव कर लें, बट व्हाट शुड बी द बेस्ट वे, if anyone would like to answer, कि RC question RC या first paragraph last paragraph, what helped you the best? Okay, sir, I'll take that question. RC passages में the thing is you need to read it slowly because questions हमेशा inference based आते हैं RC passages में, so you need to first of all read it slowly once. उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से, और जिस क्वेश्चन का, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 इज टॉकिंग अबाउट वन सर्टेन पार्ट, वहां पे रेफर कर दीजिए, यू कैन गो बैक एंड रेफर टू द पैसेज। वैसे करते करते यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, दैट आई फील वाज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ VARC क्वेश्चन। Okay, anyone else who wants to add on the verbal part? Is there anything? So I would like to add on to verbal part. So verbal was my weakest area. I mean, I remember in NMAT I scored around 250, but I could not clear the sectional cut of a verbal. And same the case with IFT. I mean, I cleared the sectional cutoff, but the percentile was way too low, and I was afraid that I will not be able to clear the sectional cutoff, although my score was good. But yes, I was able to clear the sectional cutoff in verbal. So even if आपका verbal अच्छा नहीं है, you know, you're not able to score really good in verbal, do not just aim for 99 or 100% or even 90, but please manage to clear that sectional cutoff. You know, someone did mention this before as well. अपने strong areas पे focus करो, but do not leave your weak areas. At least इतना कर लो that you are able to clear the sectional cutoff. And you can see I'm sitting in IFT and I scored 60 percentile in verbal in IFT, and overall my score was 98 percentile, and in quants it was 99.8. So you see, मैंने verbal का sectional just clear किया था. I remember 2 to 4 marks, and that would be my advice. I can see a lot of people laughing, but this is the true story. So focus on any area, be it quants. अगर आपका verbal अच्छा है and you are facing issues with quants, so please do manage to clear the sectional cutoff, and उसके लिए please work hard. So, yeah. Anything, Neil, you were adding something? Yes. I want to say something like मेरे लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, मेरे VARC में स्कोर थे लाइक अराउंड 81 परसेंटाइल। सो ये तो बहुत लोग जानते हैं, लाइक सर जानते होंगे मेरे 81 ही थे, बट क्या सर नहीं जानते हैं कि मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था और उसमें मेरे 35 परसेंटाइल से कम थे VARC। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंग्लिश कंप्लीटली लाइक बिल्कुल ही बेकार, बट वहां से मैंने पिक करना शुरू किया और लाइक धीरे धीरे करके आरसी प्रॉब्लम सॉल्व किए, वर्बल ठीक किया, लाइक बट धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब सॉर्ट करना शुरू किया और किसी तरह मैंने लाइक 80 परसेंटाइल इस बार आ गए। और यही मतलब लाइक मैंने देखा है कई लोगों का कि VARC बहुत ही वीक है, नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे, तो लाइक आपको तो करना पड़ेगा, आपको तो ये 80 परसेंटाइल का बेंचमार्क क्रॉस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इन अ गुड वी स्कूल। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू। और इसके अलावा क्या है, लाइक मैंने कई लोगों का देखा है कि जो मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था अभी, कि वो लोग बोल रहे थे कि VARC का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है। लिटरली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, बिल्कुल सॉल्व नहीं होता था। ए मारता था मैं आंसर, आंसर सी निकलता था, कुछ भी चल रहा था। तो उसके बाद लाइक मैंने वापस से सब कुछ करना शुरू किया, समझना शुरू किया कैसे हुआ, और लास्ट मोमेंट पे भी क्या हुआ था कि लाइक मैं दे रहा था मॉक्स, नंबर नहीं आ रहे थे। नंबर क्योंकि थोड़े से पेपर जो मॉक्स के होते हैं कंपैरेटिवली थोड़े टफ होते हैं जो रियल पेपर होता है, एंड दिस इज द फैक्ट। तो अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप उसको देख के ये मत सोचो कि कैट में नहीं आए। लाइक मेरे मॉक्स में आ रहे थे लास्ट टाइम 60 परसेंटाइल, 50 to 60, बट मॉक में मैंने 80 क्रॉस कर दिया। और सेम मेरे साथ हो रहा था क्वांट में, लाइक मेरे 99 परसेंटाइल थे और एग्जाम के टाइम मैंने मिस कर दिया, उसमें कम हो गए। तो ये वन डे का लक होता है, जस्ट आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करते रहो और हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। Great, good to know that. Then if we move to this segment of LRDI, which is probably the most dreadful, right? अभी क्या करें लास्ट 15 दिन में? कुछ कर सकते हैं LRDI के लिए? मतलब व्हाट आई हैव एडवाइस इज कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, जो वर्कशॉप में करें वो एक बार प्रैक्टिस कर लो। बट LRDI में जो मेजर चैलेंज मैंने देखा है वो ये है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू, मतलब वो वर्कशॉप में सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं
बट मॉक में नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस इज अ जेन्युइन क्वेरी व्हिच आई हैव सीन फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? कि सर क्लास में भी हो रहा है, 10 मिनट्स में भी कर पा रहे हैं, बुक से भी कर पा रहे हैं, बट मॉक में वी डू नॉट नो. हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप हो जाते हैं, हम एक गलत सेट पिक कर लेते हैं एंड वी डू नॉट नो व्हेन टू लीव दैट क्वेश्चन. हमने 6-7 मिनट लगा भी दिए, अब उसको कंप्लीट करें या उसको बीच में छोड़े, मतलब क्या करें उस क्वेश्चन का. वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है. और 40 मिनट्स पता नहीं चलते कहाँ गए. मतलब दैट लुक्स लाइक द फास्टेस्ट 40 मिनट्स, राइट? एक एलआरडीए सेट पिक करा एंड आप देखते हो 10 मिनट बचे हैं बस. उस सिचुएशन को कैसे डील करें? लास्ट 10 डेज में हम लोग क्या कर सकते हैं अभी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? एनीवन जिसने कोई स्ट्रैटेजी लगाई हो एंड वो वर्क करी हो फॉर योर फेवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इनसे मतलब what advice you would like to give to them for that thing? And see, you can see the chat as well. Everyone is saying please help. what can we do in for LRDA section now? I think for LRDI, first of all, you have to skim through all sets. For me, without skimming through the all sets doesn't work. I have to go through all sets and see at least 2 sets that I want to work upon. If I am done with those 2 sets, then only go forward with the next set. You have to arrange them that first I want to do this, try this, then this, then this, then this. So, anything for in me, the last, that is the only thing that worked. Or Yugal, would you like to add? Yugal, I will come to you because you are probably someone who has recorded more than 100 LRDA videos, right? So how did you manage this particular section? Talking about my exam, so I think in CAT exam there are actually 5 sets. Like when I had given the CAT, so my main aim was that first in what I feel that students, they think that you have to solve all the 5 sets in 40 minutes, but I never actually used to think in that way. In my mind, it was that at first 4-5 minutes I'll skim through all the sets. I knew that some of the sets will actually take less time for me, so my aim was that I should just solve 3 sets within 35 minutes. Each set you're giving around 10 to 12 minutes, which I feel is actually more than sufficient. And if there's actually time remaining, so there's always some particular questions in the remaining sets. In the remaining sets, you don't need to solve all the questions. Some questions, some LRDI questions, you might find some direct questions which you can actually solve it in 2 to 3 minutes. So basically out of 24 you can get 15 to 16 questions, and then actually you can get a high percentile of 98 to 99 percentile. Talking about the preparation in last 15 days, what I feel about LRDI is that uh, in last 15 days, if you solve 10 to 12 mocks, okay, each mock will actually give you a different type of question. Okay, what I feel is that, like, even you are very good with concepts, forget about your low scores before in LRDI. Give upcoming 15 days, you give 8 to 9 mocks, you'll come across so many LRDI sets. If those are not able to solve in those mocks, try it again without time limit. So in that 8 to 9 mocks, you will be covering around 50 to 55 sets, and it will actually cover various topics. So that I think that should actually give you confidence going into the exam, because I feel is that there's no particular like formula for LRDI or something. It's just about practice. Even if you start now, but I always believe it was actually my favorite section. I believe if you start now also LRDI, go directly for the mocks. Under that particular time pressure, that will give you the real result. In your real score. So in my opinion, you can either do LRDI sectional tests, or you can go for mocks and then cover around 50 to 55 through the mocks. So that will give you the real particular picture. Apart from the book, I feel that all of you have solved the book and all the video lectures. So in my opinion, just go for the mocks and solve as much as you can. Thank you, Yugal, for that detailed comment on this, and I guess this will be very much helpful for all of the aspirants. Aditya, 99.98 or 97 in LRDA, right? If I'm not wrong. Anything? Kuch hai kya Sanjeevani Booty? What they can do in the last 10 days? एक strategy जो मैंने follow करी थी was to go for LR first and keep DI for the end.
because DI questions are like you can solve one question out of the entire set, but you can't do that in LR. So if you have like 5-6 minutes left, you can do 2-3 questions of DI and get some more marks. And for the last 10-15 days, it's just like look at all the sets once, all types of questions, because you should know what to leave. अगर आप 5-6 मिनट लगा रहे हो क्वेश्चन पर फिर भी आपको दिख रहा है कि नहीं होने वाला है, so instead of spending more time on it, you should better move on to the next question. It will save you some marks. Any other input for LRD? Anyone else wants to add? Yes, sir. I would like to add a point here. So, abhi tak to I think everyone must have solved around 100 sets. I'm expecting Bare minimum. yeah, bare minimum. So, abhi tak you should be knowing what are your strengths, what are your weakness. As Aditi said, do skim through all the sets given in the paper and just don't jump onto one set कि मैंने पहला ये set देखा and I know this is my strength और मैं कर दूंगा. कभी कभी क्या होता है कि you obviously know your strength but you jump onto that set और नहीं हो पाता. So go through skim through all the sets and then go to your strength, you know. And that is one thing. Another thing, I'll share my experience. What helped me? This thing helped me with 6 marks. I mean, +3 -1 जो होता है criteria. So it helped me with 6 marks. You know, there was this set in LRDI and TETA question था. You know, उसमें 6 questions थे last year की बात है. And the TETA question था MCQ में LRDI के set में. And what I did was last 2 minutes, I just there was this set जिसमें 6 लोग होते हैं and अलग-अलग नाम होते हैं सबके. I don't remember what particularly it was, but कुछ हमें उसमें से out of 6 1 select करना था और number डालना था. So yeah, you must be remembering or you must have solved in workshops. हाँ कुछ ऐसा ही था. Yeah, arrangement, right. So I just what I did was I filled a particular number. एक में answer was 3, एक में answer was 4, कुछ ऐसा था. And I filled it in and luckily वो सही हो गया. So I was smart enough to at least guess कि it was random guess. TETA question था. TETA LRDI में मत छोड़ो. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 सेट कर लिए 3 सेट कर लिए और चौथे सेट में कोई TETA आपको दिख रहा है और एक रैंडम गेस आप मार सकते हो तो do go for it because it gave me 6 marks and it was all luck, you know. As I said, बहुत सारे factors आते हैं जिन पे काफी luck भी रोल अपना प्ले करता है. So don't leave TETA and work on your strengths, know your strengths and know your weakness, and then you know go for it. Any 2 things from Suhail? DILR was actually my weak section. So how I tackled it was this. सबसे पहले, as Aditi mentioned, I would go through all of the sets. 3-4 sets होते हैं, and you need to understand कि कौन सा set पहले करना है, कौन सा set बाद में करना है. So that's one. Second, आप पिछले mocks में जाइए and see कि कौन-कौन से type of questions में comfortable है. Puzzles में comfortable है, so that's your strength. Tables में comfortable है, that is your strength. So make sure you know what your strength is before you actually enter. And lastly and importantly, if you get stuck on a set, do not waste more than 5 minutes. Move on immediately because 40 minute का पेपर होता है, उसमें अगर आप 10 से 20 मिनट वेस्ट कर देंगे, recovery is very difficult in 40-minute time period. So even if you get stuck on a set, quickly move on कर दीजिए and that's how you're going to crack it. Great. And I will take just last comment on LRD and then we will quickly move to quants. And that will be from Sanyam और Aditi कि जब हम NMAT का एग्जाम दे रहे हैं उसका LR comparatively different है, right? वो input output, blood relation, directions के questions आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हम अलग चीज कर रहे हैं क्या? What should we follow about that? Because ठीक है, advanced LRD is coming in CAT, but NMAT में completely different है और for that matter IFT SNAP में completely different है. So you were dealing with that simultaneously or you prepared it for in a different way or what? So what I practiced was like at that time Study Bus gave books of an LRD I remember in which the blood relation, arrangements, puzzles and those type of questions were there. So I used to practice it. Then after a certain time I used to do the timer of an hour. Like I know like in NMAT 34 questions will come. 34 questions I have to solve it in an hour. So at that time I wasn't able to practice in adaptive mode, but still I tried to solve that 34 questions within an hour and with maximum accuracy. Because in adaptive only the next question will come only if you get like LOD will increase by the question you climb up.
So I think the study books and the sectional mocks help on the portal. Like the exam specific mocks were very effective on preparing. Aditi, you want to mention something? In NMAT, the good part about LRDI is you don't have all the sets. You have individual questions where you can actually gain marks, even if you have less time. So focus on that particular thing if you are weak with sets. So NMAT can be one thing where you can do better. Very good to know. So now we are moving to the final section. That is the quantitative aptitude, and ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अभी आप चैट में देखोगे तो दो तरह की ऑडियंस दिखेगी. एक जो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये हम इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं, हमें क्वांट में कोई टच भी नहीं कर सकता. और दूसरी ऑडियंस मिलेगी जो नॉन इंजीनियर्स होगी, जो कहेगी क्वांट्स नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी करा लो, राइट. एंड क्वांट्स में like I remember Lakshay शायद probably non-engineer. Anyone else who is non-engineer here, like apart from me? ठीक है. So Lakshay is there, and rest all of them are engineers. I guess even Yugal is a BBA or something. So he is also Yes, sir, non-engineer. BBA. Correct. So what is the strategy now to tackle this quant section? क्योंकि quants में बहुत सारे questions में अगर मुझे concept नहीं भी आता तो शायद मैं option fit करके आंसर निकाल सकता हूँ, या फिर मैं अप्रोक्सीमेशन से कुछ चीजें कर सकता हूँ. तो क्वांट्स में क्या करना चाहिए इन द लास्ट 10 days, क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम क्या सिर्फ अरिथमेटिक करके चले जाएं, अलजेब्रा छोड़ दें, या फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग कि ये वाला टॉपिक मत करो, वो वाला टॉपिक कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखें या सारा रिवीजन करें. क्वांट्स का सिलेबस इज द मैक्सिमम इन कैट. एलआरडीए का बहुत लिमिटेड है, वर्बल का लिमिटेड, बट क्वांट्स इज द मैक्सिमम. सो अभी हमें क्या करना है फॉर द लास्ट 12 days पर्टिकुलरली? Anyone who would like to start? Sir, so as you mentioned, yes, I'm a non-engineer, and पहले तो ये चीज अपने दिमाग से specific for non-engineers, ये चीज हटा. Don't keep this thing in mind. You know, आपका अपना confidence उससे low होता है. Just you have to give your best. What my strategy was, what I did was, I had this book which I पहले भी मैंने mention किया. I had this book जिसमें I had around 300 questions. You know, whenever I used to solve any set, whenever I used to get to know any new question or कोई ऐसा question जिसमें कोई नया concept है, you know, or any question from previous workshops, classes or whatever material. I used to have this book, and usme I used to write the question, write the answer, and in the last 15 days, I just went through all of them and gave the mocks. You know, to say it did not only help me with CAT, but also in Math, Snap, any exam. You know, most of you might be having this. If you have good enough, if you don't have, just I would say the questions, जो questions sir ने workshop में करे हैं, do cover them. It really helps a lot. It does really help a lot. You know, जो मेरे फ्रेंड्स स्टडी बस के नहीं भी थे, I tell them that कहीं से भी आप अरेंज करो. If I have, I'll give you the questions. आप उन questions को practice करो, because those questions do have a lot of concepts in them. और straight away questions ना भी आए या उसके around questions ना भी, but the questions might have those concepts involved. So please do these things and don't give up on any section. So yeah. As a Kevin, at this point of time, people should go for the topic test, previous year, or sectional test for quant, because see, this goes for everyone that the best part about quants and probably the worst part about quants कि एक ही syllabus है हर एक एग्जाम के लिए. So इसमें ऐसा नहीं है vocabulary and math में आएगा, ये उसमें नहीं आएगा, IFT में basic LR आएगा. Quants का syllabus is same for all the exams. So how to deal with that? Like अभी at that, like in the last 10 days, what you were doing for quant section particularly? So to be honest, I was taking up sectional tests because it gives you an overall view of the con section. So you get to practice various questions, and the timer is also there. So that helps in a big way, because without the timer, we are all 100 percentilers. So only when the timer comes into play, the issue is there. So the thing is that you pick your topics wisely, because some of you might find trigonometry difficult, the others might find permutation and combination, or some of you might find probability. So all of these topics, there are varying topics. So, you know, you got to pick your topics in the sectionals and, you know, try to maximize your score. So once you're done with your sectionals, go back to it and then check on what went wrong. So see if you could answer those questions that you left out as well.
because on the day it might be these topics that you left that might have the easiest questions. So it's about having an overall view. Yes, you might have your strong points, keep up to it, but at the same time, at the back of your head, have this thing of looking out for those other questions as well. So yeah, revise your formulas as well, and then attempt the sectionals. Again, go back, check on what went wrong, do a second revision, attempt another sectional. So you do that, it'll help you keep in pace, and then yeah. That's a very interesting insight, that whenever you go for any sectional test, have a second revision of what went wrong, right? This is very important. हम लोग ना एक बारी करके छोड़ देते हैं, and then we move to the next one. That would not help if you are not able to figure out कि what is the problem. ठीक है, diagnose that. Coming to Neil, आपने बोला कि मेरा quants बहुत strong था, engineer था. So what did you do in the last 10-12 days? कि हाँ मेरा quants is good and तो सर मैं बताता हूँ मैंने किया क्या था। लाइक मेरे क्वांट्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे मॉक्स में, और थोड़े से मैंने एग्जाम के दिन मिस कर दिया तो नंबर खराब आ गए। लाइक इट वाज 90 परसेंटाइल, और लास्ट ईयर थे मेरे 96 परसेंटाइल, तो बेसिकली 6% कम हो गए, 14 मार्क्स कम हो गए। तो उसका मेन कारण था लाइक एग्जाम में मैंने थोड़ा सा मेसअप कर दिया चीजें, कुछ क्वेश्चन में फंस गया, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो ये हो गया मेरे साथ। तो मैं ये बोलूंगा लाइक सबको कि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं मॉक में फंस जाओ, यहाँ पे नंबर कम आए, बट उससे डिप्रेस मत होना। लाइक वो होता है कई बार, आप मॉक्स में फेल हो जाओ वो बेटर है, एग्जाम में मत फेल होना। मैं मॉक्स में पास कर रहा था, मैं एग्जाम में फेल कर गया, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो इस चीज को। और दूसरा बात जो मैं बोलूंगा कि सौरभ सर का एक वीडियो है 4 घंटे का यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसमें सारे फॉर्मूले हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैंने 3 दिन पहले उसको वीडियो को मतलब नोटिस किया था, उसको सारे नोट्स बना दिए थे, और एग्जाम के पहले 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बैठा था और कभी भी बस वो बुक खोल के वो सारे फॉर्मूले देख लेता था, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें पड़े हुए हैं वो सब देख लेता था। तो ये मेरा क्वांट्स का रिवीजन था। सो आप लोग ये कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर, मुझे मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये चीज। okay. Any input from Aditya? Then we'll see Suhail and then Aditya, quants के लिए क्या करें? क्वांट्स में वही कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, सो आई स्किप्ड द प्रिपरेशन इन लास्ट फ्यू डेज, तो उस वजह से क्वांट्स में थोड़ी परसेंटाइल भी कम आई। बट इन द लास्ट डेज आई डोंट थिंक गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक्स इज स्मार्ट, बट just focus on the topics that are strong, and for the topics that you are not comfortable with, just go through the formulas and shortcuts so that during the exam you can solve the questions which are easier from those topics. So just focus on your skills for the last days. Suhail for quants. So सबसे पहले तो मैं वो 4 घंटे का वीडियो मेंशन करने वाला था जो कि नील भाई ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। सो डू गो थ्रू इट, नॉट जस्ट वंस, मे बी ट्वाइस अगर जा पाओगे। इट्स अ वेरी गुड वीडियो, सारा आपका उसमें रिवाइज हो जाएगा। You have to remember all the formulas. There's no other way, of dealing with it. Specifically, one more point I want to mention. Attempt कैसे करना है quant के section को? So we don't know कि easy questions start में आएंगे या end में आएंगे. Easy questions किसी भी topic से आ सकते हैं, उनकी placement कहीं भी हो सकती है. So how you attempt is, जैसा कि सौरभ सर ने सिखाया था, आप question देखिए, अगर आपको easy लग रहा है on spot attempt करिए, अगर medium लग रहा है कि you can solve it, तो उसको mark करिए। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है और अनफेमिलियर लग रहा है, यू स्किप इट, डू नॉट वेस्ट टाइम। सो ऐसे करते करते राउंड 1 में आप सारे इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, व्हिच एंश्योर्स कि कोई भी इजी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए, इवन इफ इट इज एट द एंड। देन इन राउंड 2 यू कम बैक, जो क्वेश्चंस आपने मार्क करे हुए थे, देन यू अटेम्प्ट टू सॉल्व दोस। यू डू नॉट टच द डिफिकल्ट वंस, यू ओनली टेक द इजी एंड द मीडियम वंस। दैट इज हाउ यू अटेम्प्ट द QA section. Great, Suhail. And I guess all the 3 sections, all of you have got a lot of clarity. We will have a longer discussion abhi, but I asked them to come for 30-40 minutes, and I've already stole your odd 60-80 minutes now. So I will be I'm extremely thankful to all of you that you guys have joined, shared your inputs. Probably these guys are in a better confident space right now, because वो मेरे से सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप तो कर ही लोगे, हो जाएगा। बट देन व्हेन दे लिसन टू यू, राइट, व्हेन दे लिसन टू यू कि नहीं ऐसे ही करना है, और ये मैं उनको बोलता हूँ कि हमारे प्रीवियस के बैचेस में सुहेल का मॉक्स में नंबर नहीं आता था, या आदित्य का क्वांट्स स्ट्रांग होने के बाद सबसे कम परसेंटाइल कैट में रहा है, ठीक है, डिस्पाइट ओवरऑल परसेंटाइल शायद 99.92, बट क्वांट्स में कंपैरेटिवली विच द परसेंटाइल ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। या केविन का 1 साल ड्रॉप होने के बाद फिर से वो 99 अचीव किया है। एंड व्हेनेवर आई शेयर दीस स्टोरीज ना, दे डू नॉट बिलीव, उनको लगता है नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, वो अलग होंगे कुछ, राइट? जब हम डिस्कस करते हैं कि नहीं लक्ष्य का 40-50 मार्क्स में आया करता था, फिर देन ही स्कोर 97-98 इन एग्जाम. सो when they have listened to you today, right, so उनको लग रहा है हाँ रियल है ये सब, like these are the same, like ये हम में से ही एक है. So I'm very much thankful to all of you that you guys have joined, and all of you, I don't know, but अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप इनसे कुछ पर्टिकुलरली पूछना चाहते हो, you can connect with them on LinkedIn, probably you can add them, and that's a good thing for you as well. So आप लोग उनको connect कर सकते हो. And before I proceed with the session, I would like all of you to give any one message before the CAT exam, because this is the last class from my end as well. So they will be meeting now, they will be relaxing with themselves, revising, and then appear for the exam. So any one thing you want to tell, agar if you just think that if you have to advise your younger self, एक साल पहले आपको कुछ बोलना होता है उसे 10 दिन पहले, तो आप क्या बोलते अपने आप को? So I'll take that up. So after your preparation is done, you have reached till this point, you have earned it for yourself. You're not just any random person going into that exam hall. You have earned it through your hard work. For this 10 days or for those 2 hours especially, just forget what all can go wrong, kitne marks kharab gaye, kitne percentiles. Just zoom out for a moment. Just enjoy the 2 hours. Give it your best shot. Forget about the result. And trust me, the results will not betray the efforts that you have put into it. So that is, how you should attempt it. That's mine. Thank you. Everyone, one by one. You can't take anxiety away, but try to keep it as low as possible. Trust me, it will help increase your score. Anxiety is the worst thing that you can have at that point, and you will have it, but try to minimize it. Okay, so what I want to say, like, first of all, यार कोई स्ट्रेस मत लो आप लोग. और सेकंड थिंग, लाइक आप जो चीज कर सकते हो ना उस पे ध्यान दो. ये मत ध्यान दो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, खराब चला गया, लाइक दैट थिंग यू कांट चेंज. वो मतलब जो होना होगा होगा, वो तो उस दिन की बात है. बट आपका काम है लाइक आप 100% एफर्ट डालो, जो कर सकते हो करो, और टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, और आराम से पेपर देने जाओ. एंड ऑल द बेस्ट. एंड उसके अलावा लाइक मेरे पास अभी 11-12 लिंक्डइन रिक्वेस्ट आ चुके हैं, और किसी और को लाइक एमडीआई के बारे में जानना हो, या फिर लाइक जो मैं कोर्स कर रहा हूँ डुअल डिग्री प्रोग्राम, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन. हो सकता है वहाँ पे लाइक तुम्हें मैं मिलूँ ना, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे अपना ईएससीबी बिजनेस स्कूल कर रखा है प्रोफाइल में, क्योंकि मैं यूरोप में इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ. सो यू कैन सर्च मी देयर लाइक ईएससीबी बिजनेस स्कूल नीलकमल. ओके, एंड थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. Sanyam, your 2 cents for all of these students. So I think just believe in yourself. Like one thing that I always practice, like during CAT preparation, during my placements and all, like don't ever lose trust or confidence on yourself, because if you like believe and have confidence that you will do it, so certainly if not that thing, not that up to the mark, but you will land up something below there, but you will cross the passing mark. So, and if there is any assistance needed, any certain query or information regarding ANMAT or NMIMS, please feel free to contact me on LinkedIn, and I'll be happy to help. First of all, I'm sorry to all of you. You might be bombarded with a lot of requests and questions now on LinkedIn. This is what happens whenever we conduct any session. ठीक है, but ये अच्छा हो जाएगा, थोड़ा मेरा workload कम हो जाएगा. ठीक है. So they will be asking, no, just kidding. But yes, Yugal, anything for all of these students. And they are personally connected with you. Probably today they are meeting you for the first time, but you have played a contribution in their preparation as well. So anything? Yeah, so in my view, actually, in my own experience, one day before, I was actually very anxious, but I remember that time Saurabh sir had released a video in YouTube, and it was actually very motivating for me. That day, I actually didn't do anything, and that video actually reduced my anxiety. After that, I actually became very confident, and now after like 1.5 years, when I reflect back on that, I actually feel that it is like I should have not been that much anxious, which I was very lucky that I kept myself calm and I gave my best in doing the exam. Also, what I feel is that when you all are giving your exam, just be towards yourself. Don't need to see around. Don't need to talk to anyone like just before the exam. You have prepared yourself. You know that you should have confidence in yourself, and you know that you can do the best. Okay, don't need to in my last mock actually I didn't do well, but still I believe that my whole 1 year, 1.5 year
or preparation will do justice to me in any of the exam which I'm actually giving. Okay, so I just want that all of you should just believe in yourself and just give your best. That is only my message. Yeah. Kevin, what would you like to suggest? You are not audible, I guess. Uh, Is it now? yeah, it's perfectly fine now. Am I good to go? Yes. Yeah, so my 2 cents is that you will be anxious. It's okay to be anxious because you're going to get even more anxious once you join B schools. So you will be there. Just stay there, give it your best shot. You're prepared enough. Some things might go sideways, but it's okay. It's all part of the game. You're going to write multiple exams, and you might clear some, you might not clear some. It's all part of the game. So just go ahead, give it your best shot, and leave the rest. Thank you. Lakshay. Yes, the only thing I would like to say is a lot of things are waiting for you, and pressure ho raha hai, pressure le rahe ho, anxiety ho rahi hai. That is important because it will help you a lot when you enter any B school, So that's all what I want to say, and just give your best. Zyada mat socho, and we are open to any queries. We have mentioned our LinkedIn profiles. You can text us. We might take some time, but yes, we'll address all your queries. And also, particularly if you have any queries for IFT, IFT Delhi, Kolkata, I'll be happy to help. So all the best, everyone, and I'm looking forward to see a lot of you as my juniors, and we all are looking to see you all. Aditya, final comment. Yeah, so anxiety on the day of the exam is very normal, but just stay confident in whatever sir has taught you. I know it's really good stuff, whatever he has taught. So just be confident. And life beyond that exam is really good. So just crack it and be confident. Thank you so much. Thanks a lot to all of you that you took some time in this busy schedule of MBA, right? Now I am having the same shoes as yours, so I can totally relate. How is it to I remember a year before I used to tell my student, "Itna kya busy ho, koi nahi." Now I know. I remember, and this is a very funny anecdote. I would like to tell all of you as well. That in the last 5 months, I have entered to Excelrai. It's just 4 days when I have switched off the lights and slept. Otherwise, always I crash down. I'm doing something and then I just go to sleep, and morning I realize it's morning now. So only 4 to 5 days when I consciously switched off the lights and then went to sleep. Otherwise, I'm sleeping. I don't know when. So that's how the life is. But it is worth it. It is genuinely worth it to enter, to network with such people, to learn from these professors, and that is the biggest motivation for all of you. And thank you, everyone. Thank you, Kevin, Aditi, Lakshay, Sanyam, Sohail, Neil, Aditya, Yugal, and Akash, who has left because of a meeting. Thank you so much for your time. I will be just taking ahead from here, and we will connect later on. Thanks a lot, and all Thank the very you. best. I'm sure you, that you sir. guys are doing great in your respective colleges, and let's catch up soon Thank again. you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. All the Bye-bye. best. Great. So I hope you got to hear a lot of insights. काफी सारी चीजें आपने सुनी होगी, समझा होगा, जाना होगा. एंड काफी सारे लोग मुझे बता रहे थे कि सर अपनी स्टोरी बताओ. मैं तो अपनी स्टोरी डेली बता ही रहा हूँ ना. So these people have took some time out of the busy schedule just to have a pep talk with you, so that they can talk to you, they can share their experience with you. And that is how we did that. And now we will be taking it ahead from here, and I will be telling you some important things as well which are important for exam. Okay, and then we will I hope this session was helpful. My whole objective was कि आपको ये realize हो कि ये सब बच्चे यही last year यहीं बैठे थे जहाँ आप बैठे हो, right? इनमें कुछ अलग नहीं है, मतलब they are not different. ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा. Are you getting my point? तो बिल्कुल भी ये माइंडसेट निकालो सबसे पहले तो कि यार हम लोग वैसे नहीं हो पा रहे हैं, या हम लोगों का वो वाला माइंडसेट नहीं है, हमारा वो सिस्टम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब राइट, कुछ भी नहीं है. मतलब यू आर परफेक्टली in the right space, with the right preparation, with the right mindset, and you will do wonders. You will definitely do wonders, right? Is it clear?
अभी आपको मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है? क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें चेंज की थी. आई डोंट नो, मतलब यू कैन सी द स्क्रीन एंड एवरीथिंग राइट. वो व्यू वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, बट हाँ. स्क्रीन व्यू का ठीक है ना, मतलब इट्स कमिंग फाइन, लाइक नॉर्मल क्लास की तरह आ रहा है ना, जैसे हमेशा आता है. ग्रेट. नहीं आ रहा तो ऊपर आपके सामने ऑप्शन होगा, एक होता है व्यू का ऑप्शन. एक सेकंड रुको. एक मिनट. Okay. I guess now it should be better. It's perfect now. ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं फाइनल आपको 15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देने वाला हूँ बिफोर योर एग्जाम, सो दैट यू कैन गो विद द राइट सेट ऑफ माइंडसेट एंड देन यू कैन बिगिन विद इट. देखो अभी जो आपको 10-15 दिन करना है ना, वो सिर्फ ये करना है कि आपका जो फोकस है वो एग्जाम पे रखना है. इधर उधर की कुछ चीजें नहीं करनी. आपने सारे लोगों से सुन लिया, आपने टॉप कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे देख लिए. यहाँ पे बहुत सारे 99 परसेंटाइलर थे, चाहे वो केविन हो, सुहेल हो, आदित्य हो. बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो IIM बैंगलोर, SP जैन, IIM रोहतक, IIM टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक्सेल राई. तो यू ऑल हैव ऑल द गुड थिंग्स राइट. ठीक है, तो अब आप ये मत सोचो कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा, क्या होगा. अभी आप बस ये सोचो कि यार जो आपने तैयारी करी है दैट इज मोर देन इनफ. अभी भी थोड़ा सा डीमोटिवेशन रह गया, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आई एम प्लेइंग अ वेरी स्मॉल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. उसको बहुत अच्छे से सुनना प्लीज, ठीक है, एंड देन लेट मी नो. ठीक है. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I worked my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast. Inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life? You got a problem with your environment? Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my
It just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you wanted to have it, get your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. How was it? ठीक है, तो भाई अब आपके पास कंप्लीट मोटिवेशन है और कुछ हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो टाइम है उसका जुडिशियल यूटिलाइजेशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी है। इस इंसान को आप लोग जानते हो, ठीक है। इस समय जो हमें लास्ट 10 डेज चाहिए ना, वो चाहिए हमें सेल्फ बिलीव। इंसान को आपने देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है। ब्रूस ली, द लेजेंडरी। आपको पता है ब्रूस ली इतने सक्सेसफुल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनका सेल्फ बिलीव इतना स्ट्रांग था, इन्होंने अपने आप को एक लेटर लिखा था 1969 में। देखो, इन्होंने खुद को एक लेटर लिखा था 1969 में कि आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इन रिटर्न आई विल गिव द मोस्ट एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस, I will render the best of quality in the capacity of actor. Starting 1970, I will achieve world fame, and from then onwards, the end of 1980, I will have in possession $10 lakh. ये बहुत जल्दी दुनिया छोड़ के चले गए थे, बट इन्होंने 1969 में अपने आप को ये लिखा और 1972 तक इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। सेल्फ बिलीव। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, आपने ये ब्रांड देखा है? You all can relate to it, right? देखा होगा, टेस्ला की गाड़ियां हैं, ये आपने देखे होंगे ब्रांड्स। इनका फाउंडर कौन है? फाउंडर या चेयरपर्सन सीईओ पोजीशन पे इलॉन मस्क। आपको पता है इलॉन मस्क ने अपने आप को एक ट्वीट लिखा था 2006 में। 2006 में इसने, देखो हर एक इंसान के प्लस माइनस है, बट इसके बारे में आप ये देखो इस इंसान का सेल्फ बिलीव कितना स्ट्रांग था। 2006 में इन्होंने अपने आप को एक ट्वीट लिखा था, बिल्ड स्पोर्ट्स कार, यूज दैट मनी टू बिल्ड इवन अफोर्डेबल कार, यूज दैट मनी टू बिल्ड इवन मोर अफोर्डेबल कार एंड प्रोवाइड जीरो एमिशंस। इलेक्ट्रिक कार के बारे में उसने तब सोचा था जब लोग को पता भी नहीं था। नहीं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग सोचते थे ऐसी गाड़ियां जो स्लो होती हैं। टेस्ला ने पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी हाईफाई बनाई जो टॉप गाड़ी को कॉम्पीट करती है। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज दैट कि आपको बस ये समझना है कि यार अब आपका जो बिलीफ है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी मेहनत आपने करी है वो मोर देन इनफ है, इससे ऊपर आपको नहीं चाहिए। यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड हेड स्पेस। अब आपको कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करना है। अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा शेयर करूं, मैं बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, बट आपको मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूं। अगर आप कैट 21 की बात करते हो तो आउट ऑफ 198 आपको 98 मार्क्स चाहिए टू गेट 99 परसेंटाइल।
आपको 50% पेपर ठीक करना है, अगर आपने वो करेक्ट कर दिया यू कैन गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। जो भी गैप्स है, जो भी चैलेंजेस है, उनको फिक्स करना है, ठीक है। लास्ट के जो 12-15 डेज है उसमें आपको पम्प्ड अप रखना है, एक एक चीज, एक एक मूवमेंट जो आपने पढ़ा है उस पर आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना है, रिवीजन करना है। जितना भी स्कोर आ रहा है अब बस अपने माइंड को सॉर्ट करके सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी करनी है, जो मैं बार बार बोला हुआ हूँ, बार बार बोला हुआ है, बार बार बोला हुआ है। सबसे पहले रिवाइज, जो भी वर्कशॉप्स हमने करी है 30 की 30 वर्कशॉप्स अब आप रिवाइज कर लो। आपने पहले कोई क्लास छोड़ी है, नहीं छोड़ी, आपने उससे पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये 30 क्लासेस अपनी रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल तरीके से। करेक्ट। अब आप वो चीज कर लो एंड उसके बाद यू विल सी कि जो भी आपके 30 वर्कशॉप्स में सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपके पास टाइम है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। लास्ट के 5 साल के मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उनको सॉल्व कर लो। अगर आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट हो जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, आपके पोर्टल पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक की फॉर्म में है। जो बच्चे नए हैं, आपके पास अगर ऑलरेडी मॉक्स हैं वो कर लो, अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो आप कोई मॉक्स बाय कर लो। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो 4 घंटे की वीडियो कौन सी है, 5 घंटे की वीडियो कौन सी है, ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर करी तो ये वो 5 घंटे वाली वीडियो वही है, वो वीडियो, वो वीडियो डन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी आप कर चुके हो जब आपने क्लासेस स्टार्ट की थी, वो रिवीजन वीडियो भेजी हुई है आपको, है ना, वही वाली वीडियो है वो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जिसके भी नेट पे जाओगे फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे, हमारे पोर्टल पे अगर आप हो तो वहां पे अवेलेबल है, सब कुछ है। थर्ड चीज, अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट कितने डेज बचे हैं, अगर मैं आज बात करूँ, आज 14th हो गया है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो मेरे पास टोटल 10-12 डेज बचे हुए हैं, है ना। 10-12 डेज के जो भी डेज है मेरे पास, आप 4 से 5 मॉक लगाओ, ठीक है। अगर आप डेली लगा सकते हो, सब चीज सेट है तो डेली कर लो। अगर आपको लगता नहीं डेली मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो हर ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक लगाओ, आज मॉक लगाओ, कल उसका एनालिसिस करो। जो भी मॉक आप दे रहे हो ना उसको एनालाइज करो, स्कोर मत देखो, परसेंटाइल मत देखो, सिर्फ ये देखो क्या चीजें गलत हुई, कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या गलत हुआ। वो गलतियां नेक्स्ट मॉक में मत दोहराओ, फिर नेक्स्ट मॉक में वो गलती नहीं करनी है। तो 5 मॉक्स में जितनी भी गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां हो सकती है सिली मिस्टेक की, वो गलतियां हो सकती है गलत सेट पिक करने की, वो गलतियां हो सकती है आरसी गलत चूज करने की, वो गलतियां हो सकती है क्वांट्स में इजी क्वेश्चन छोड़ के डिफिकल्ट पिक करने की। वो सारी गलतियां आपको फिक्स कर लेनी है। वो 5 मॉक्स में सिर्फ ये देखो यार, मुझे 5 फुल लेंथ मॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उनको अपियर करोगे तो ये देखो मेरे से 40 मिनट में क्या चीज गलत हो रही है, उस चीज को सिर्फ एनालाइज करो एंड नेक्स्ट मॉक में उसको रिपीट मत करो, ठीक है। मत देखो क्या स्कोर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, बेकार आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, तैयारी आपने करी हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर। और लाइफ में ना देखो, एग्जाम की अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, आपके साथ सारे टॉपर्स ने स्ट्रैटेजी शेयर करी है, मैं अपनी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैं वर्बल करता हूँ तो मैं उसी तरह से करता हूँ जैसे इन लोगों ने बोला कि यार मैं ना आरसी को देखता हूँ, आरसी देखने के बाद मैं थोड़ा सा पहले आरसी का ग्लांस ले लेता हूँ, क्या है आरसी, थोड़ा सा ऊपर से नीचे देख ले क्या है, फिर मैंने एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया कि अच्छा ये चीजें पूछी है, उसके बाद मैं पूरे आरसी को बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन उससे रिलेट करता हूँ, जितने भी मैं आरसी में क्वेश्चन करता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन अप्रोच से करता हूँ, कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता उसको हटाता हूँ, फिर मैं 2 पे आ जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इन दोनों में से क्या चीज है। कोई भी एक्स्ट्रा एजम्पशंस ऐसा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, पहले से एक प्री कंसीव नोशन है आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर को टिक करोगे। बहुत बार एग्जामिनर ट्रिकी सिचुएशन दे देता है, जैसे मान लो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अगर आप बड़े घर में रहते हो तो हो सकता है आपके माइंड में पहले से नोशन बन जाए, मैं बड़े घर में रहता हूँ तो भाई मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी, वो चीज आपका प्री कंसीव नोशन है, वो आप पहले से सोच के चल रहे हो, वो चीज नहीं करनी। जो चीज पैसेज से आप डिराइव कर सकते हो सिर्फ वही आंसर लिखना है, कोई एक्स्ट्रा चीज दे रखी है वो आपको वहां पे मान के नहीं चलनी है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, नॉन आरसी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग टीटा में नहीं होती। अगर आपने सारे टीटा भी गलत कर दिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके परसेंटाइल पे, तो उन क्वेश्चन को जरूर करना है, ठीक है। पैरा जंबल्स के ऊपर मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है, पैरा जंबल सर्च करोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगी। बाकी टॉपिक्स आपने क्लास में पढ़े हुए हैं, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, इन क्वेश्चंस को करना जरूर, सिर्फ आरसी के चक्कर में नॉन आरसी क्वेश्चन छोड़ मत देना, ठीक है।
पूरे कैट एग्जाम में किसी भी टीटा वाले क्वेश्चन की कोई भी वो नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चैलेंज नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप सारे कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। बेटा अब आप फुल लेंथ मॉक करो। मैं फुल लेंथ मॉक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन के बाद आपको रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलता वो रिलैक्स, राइट। तो आपको एक साथ देना पड़ता है 2 आवर्स का, तो वो आपको अपीयर करना है। देन व्हेन वी मूव टू दिस सेक्शन LRDA, तो LRDA में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बार बार क्लासेस में बताया है, कि एक बार ना कोशिश करके पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें नहीं आ रही हैं, कौन सी चीजें प्लस है, कौन सा माइनस है, वो सारी चीजें देख लो, ठीक है। एक बार जब आप 5 मिनट में सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हो ना, उसको गो थ्रू करने के बाद आप ये देखो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है। वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी से परसेंटाइल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्कोर से फर्क पड़ता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप एक बार ही देख सकते हो अपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। आपका DI स्ट्रांग है, DI से स्टार्ट करो, LR स्ट्रांग है, LR के साथ स्टार्ट करो। मैं आपके साथ बहुत टाइम से मैंने सेट कराया आपको, आपने खुद भी देखा, जो सेट डिफिकल्ट दिखता है वो आसान होता है, जो आसान दिखता है वो डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन ईजी है कि डिफिकल्ट। आपने इतने सारे सेट करे हैं, उनको एक बार रीप्रैक्टिस कर लो एंड देन आप वहां से डिसाइड करो, ठीक है। क्वांट्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो क्वांट्स में हमने देखा है जो 3 राउंड वाली स्ट्रैटेजी है बहुत यूजफुल है। मॉक्स में आपने लगाई वो 3 राउंड वाली। राउंड 1 में हमने इजी क्वेश्चन कर लिया कि आसान क्वेश्चन, ये आपने टॉपर से सुना ही है। या आदित्य ने आपको खुद बताया, आपको सुहेल ने बताया, दोनों 99 परसेंटाइल है। आदित्य का 99.92 परसेंटाइल है, सुहेल का 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है। उन्होंने आपको बहुत सिंपल सी बात बताई कि आप पहले राउंड में जब देख लोगे आसान क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। अच्छा है 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर सेकंड राउंड में देखो, जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये मैंने मार्क करा हुआ है, उनको सॉल्व करो, ठीक है। फिर आप थर्ड राउंड में सॉल्व कर लो। तो हर राउंड अपना 10-10 मिनट का रखो, लास्ट के 10 मिनट में अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। जो बच्चे कैट के अलावा नॉन कैट एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एनमैट का एग्जाम आने वाला है आपका, लेट्स से IFT का पेपर भी आएगा, स्नैप का पेपर होगा, तो आप लोग एक चीज का जरूर ध्यान रखो कि जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे एनमैट की अगर मैं बात करूं तो वर्बल में वोकैबुलरी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। एनमैट की अगर मैं बात करूं तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है अलग से, LR में बेसिक टॉपिक, तो ये टॉपिक जरूर देख लेना एंड इनके मॉक जरूर लगाना। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, मेक श्योर करो एग्जाम से पहले आपने कम से कम 8 से 10 मॉक्स लगा रखे हो, 8 से 10 मॉक्स, ठीक है। अगर मैं जैट की बात करूं, वहां पे वर्बल क्वांट्स मोर और लेस सेम रहता है, डिसीजन मेकिंग वहां पे आता है। तो डिसीजन मेकिंग की मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है, और जो बच्चे हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स, आपको पूरा पेन ड्राइव वाला कंटेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ, आपको याद होगा, उसमें से अपने डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स देख लिए। जैट की आपको तैयारी करनी है, आप बाद में कर सकते हो। जो बच्चा है, चाहे वो क्रैश कोर्स, मतलब जो लाइव क्लास के बच्चे, उनको कुछ नहीं करना। जो एडवांस वर्कशॉप के बच्चे, अगर आप बाद में जैट की तैयारी करना चाहते हो, यू कैन सी इट ऑन वेबसाइट, बट अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस कैट पे होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अराउंड 40-45 डेज होंगे जैट के लिए, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। एनमैट क्योंकि साथ साथ बच्चे दे रहे हैं, तो एनमैट के लिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। बाकी स्नैप का पेपर, अगर आपने एनमैट की तैयारी कर ली, स्नैप ऑटोमेटिकली हो गया, उसके मॉक्स लगाओ एंड गो फॉर इट, ठीक है। और मॉक्स लास्ट में, लास्ट के अभी जो 10 दिन है कैट से पहले, 10-12 दिन आपको अपने मॉक्स लगा के अच्छे से एनालिसिस करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो ये आपके पंकज बेटा ऑलरेडी बता तो दिया एनमैट का, कितनी बार एक चीज पूछोगे, है ना। सेम चीज अभी हमने डिस्कस करी है, ग्रेट। बाकी देखो, हर एक एग्जाम के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो चैनल पे आती रहेगी, बनती रहेगी, तुम लोग अटेम्प्ट करते रहोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक एग्जाम को आप दे सकते हो। अगर आपने कैट कर लिया तो आप IFT भी अपेयर कर सकते हो, स्नैप भी कर सकते हो, हर एक एग्जाम अपेयर कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है बस वो आप सॉल्व कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो, यू आर इन अ वेरी गुड हेड स्पेस, ठीक है। बेटा क्या चीज एग्जाम में कैरी करनी है वो सब तो लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। LRDA का बेटा जो हमने क्लास में करा है वो टॉपिक्स करने हैं सारे, और किसी एग्जाम को पर्टिकुलरली आपको देखना है वो सब चीजें आपको मेंशन्ड है। यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियोस आप डाल देना, एनमैट स्टडी बस, आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो सब बहुत बेसिक चीजें, ऑलरेडी बहुत वीडियोस बन चुकी है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एक एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है कि एक एग्जाम नहीं हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप देखो आपके सामने इतने सारे एग्जाम्स हैं, ये आपके सामने इतने सारे एग्जाम है, कैट है, जैट है, IFT है, इनमैट है, स्नैप है, सीमैट है, बहुत एग्जाम्स हैं। आपको ऑब्जेक्टिव एक टॉप कॉलेज में जाना है, चाहे किसी भी एग्जाम के थ्रू जाओ। जितने एग्जाम्स आप अपेयर करोगे उतने अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगे इसी साल एक टॉप कॉलेज में जाने का। तो अपने पर बिलीव रखो, जो आपने मेहनत की है वो आपने सब कुछ कर लिया है। अब आपको अपने बस फाइनल टच देना है, अपने रिविजन प्लान को बिल्ड करना है। चाहे आपका सीमैट का एग्जाम हो जनवरी में, SRC फरवरी, जो भी एग्जाम जब आना होगा,
जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है, जो आने वाला होगा चैनल पे आते रहेंगी वीडियोस, उसको आप ट्रैक रखो। इंटरव्यू वगैरह की टेंशन अभी मत लो, अभी सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करो। जब इंटरव्यू का नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी चीजें भी मिलती रहेंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? हाँ जी बेटा, वर्कशॉप्स अगर आपने रिवाइज कर ली, यू आर गुड टू गो फॉर कैट, यू आर गुड टू गो फॉर कैट। बाकी एग्जाम के लिए जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है बस वो देखो, समझो, एंड यू आर गुड टू गो। जीके की अगर बात करें तो चैनल पे पूरी भाई वीडियोस आई है, करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज डाल दी है। करंट अफेयर्स अगर आप चैनल पे जाकर देखोगे, प्लेलिस्ट जनवरी से लेके हर एक मंथ की करंट अफेयर्स वो देख लो, IFT क्लियर, गुड टू गो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, तो आई होप अब आपकी जो जर्नी रही है, फाइनली यहाँ पे मैं एक क्लोजर दे रहा हूँ कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 1 साल से यहाँ कनेक्टेड हैं, जितने भी वर्कशॉप के स्टूडेंट है, आप 30 डेज से हम बैक टू बैक पढ़ रहे हैं, काफी सारी चीजें हमने करी हैं, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, हर एक चीज आपके सामने रही है। अब बस आपको अपना परफॉर्म करना है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म। देखो हर साल, देखो एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट ईयर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊंगा, और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आपको डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे। बट जब हम इतना पढ़ाते हैं ना, ठीक है, एक हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने फीस प्रोवाइड करी है, हमने आपको कोचिंग प्रोवाइड की है, बट एक अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता है कि यार इन बच्चों के साथ मेहनत करी है, अब ये रिजल्ट निकाले। ठीक है, तो मैं अगर आप आज आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बहुत ज्यादा ये चीज कभी मैं चैनल्स पे भी नहीं बताता हूँ ज्यादा, बट इफ यू वांट टू सी ना, हम लोग पहले जब स्टार्ट करे थे, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत मेहनत करी है स्टार्टिंग में, बहुत मेहनत करी है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग हुआ करता था दिल्ली में, राइट? बहुत वहां पे हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, सुबह 7 बजे, और मैं और अनवर से जाते थे ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करने अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, देखते थे बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, उन चीजों को सुनते थे, समझते थे। ठीक है, हमें लगता था चीजें कर नहीं पाएंगे, जैसे आप हो ना, मतलब हम लेजिट वहीं पे थे, और आप मानोगे नहीं बट सच में वही चीज थी कि आप जहाँ हो ना, मतलब हम लोग वही सोचते थे यार ये होगा ही नहीं हमसे, हम कैसे कर लेंगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हम कैसे अपने इंस्टीट्यूट बिल्डअप कर लेंगे, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे होगा नहीं, कैसे करेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते हम फाइट। बट यार हम लगे रहे, मतलब पता है, सिर्फ लगे रहे, सिर्फ लगे रहे, सुबह से लेकर रात तक लगे रहे। ठीक है, जितना टाइम मिलता था ज्यादा सोचते नहीं थे। एक दिन आते थे, नहीं आया कोई भी बच्चा, कोई नहीं यार, कल फिर मेहनत करेंगे, अगले दिन फिर मेहनत करेंगे। तो ना तभी से एक हैबिट बन गई। ठीक है, उस तब से वो हैबिट बन गई, बिलीव इन द प्रोसेस, यू विल सी द प्रोग्रेस। ठीक है, तो वही वाली चीजें हैं, वही, इसीलिए यार बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम लोग डांट देते हैं आपको कि यार नहीं, तुम क्यों नहीं पढ़ के आते हो घर से। यार लगता है कि यार जब तुम आए हो, तुमने फीस भी पे करी है, तुम मेहनत करना भी चाहते हो, तो थोड़ा सा मेहनत और कर लो तो क्या हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा मेहनत और कर लो तो क्या हो जाएगा। तो वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसीलिए कभी डांट भी देते हैं। तो हमेशा यार कोशिश यही रही है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो जब आप क्लास में आते हो ना, ये मैं चाहता ना ये सेशन में बीच में करा सकता था कभी भी, बट नहीं, 30 डेज का जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि ये 30 डेज सिर्फ वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप हम आज एक्स्ट्रा कर रहे। क्यों? यार मुझे लगा चलो एक फाइनल पुश और, शायद मेरी बात में नहीं मानेंगे तो अपने जैसे स्टूडेंट जो जो नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट ईयर वहीं पे बैठे हुए थे, उनकी बात सुनकर शायद आपको वो अच्छा लगे। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, यार आप में से कुछ बच्चे आए नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स को बताएं कि यार हम लोग यहाँ बैठे हुए नर्वस थे, ये बच्चे अभी तो गए हैं 5 महीने पहले, ये ये एग्जैक्ट 8-9 महीने पहले आपकी पोजीशन पे तो बैठे हुए थे यार। इनको भी तो वही डर था, इनके सीनियर्स इनको गाइड कर रहे थे, आज ये तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम वो परफॉर्म करो, मुझे पता है तुम कर सकते हो यार। ये गेम ना मेंटल फाइट है, ये पूरा एग्जाम सिर्फ मेंटल टफनेस का एग्जाम है। और आप अगर ये देख लोगे ना कि यार मेरा कंट्रोल मेरे इमोशंस पे है, मेरे मार्क्स से मैं फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी प्रिपरेशन में मुझे भरोसा है, तो तुम्हें फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो अपना रिवीजन पे फोकस करोगे, तो अपना पढ़ने पे फोकस करोगे, एंड उसी पे ट्रस्ट करो। अब मतलब जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, वो मेहनत करो यार, मुझे करना ही है, जो होगा देखा जाएगा। मेरे सामने 10 एग्जाम है, क्यों नहीं क्रैक होगा यार? अगर आपकी मेहनत ऑनेस्ट है, आपकी तैयारी ऑनेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन ऑनेस्ट है, तो क्यों नहीं होगा? आप बताओ क्यों नहीं होगा? एक एग्जाम खराब हो सकता है, 2 हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपने जो 10 दिन है ना, अपने आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज रखो। मेरा चैनल भी नहीं देखना, आपको जरूरत नहीं है तो क्यों देखना? कोई फॉर्म आए तो वीडियो देखो, नहीं तो मत देखो। बाकी चैनल बेकार का मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, अपने दोस्तों से फैम, अपने आप को एकदम काम पोजीशन में रखो। यार तुमने अपना साल दिया है,
तुमने अपने 2 महीने दिए, अब तुमने 4 महीने दिए, अब नहीं रिजेक्ट करेंगे यार। मैं जब स्टडी बस ऑफलाइन कर रहा था ना, मुझे लगता था यार होगा ही नहीं, क्या करें, हो ही नहीं रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू, छोड़ देते हैं। लोगों के अपने आप क्वेश्चंस आने लगे कि अरे तुम तो बेकार डिसीजन ले लिए, तुम किसी आईएम में चले जाते, तुम किसी वहां चले जाते। बट अपने ऊपर एक बिलीफ था यार, आज नहीं तो कल करेंगे, आई विल रीच टू माई डेस्टिनेशन, मे बी स्लोली बट डेफिनेटली। तो आप में से हो सकता है कोई बच्चा स्लो हो, कोई बच्चा फास्ट हो, कोई बच्चा जल्दी कर लेता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता है, बट कर सकते हैं ना यार, हम करेंगे, क्या टेंशन है, ठीक है। तो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अभी स्पेशलाइजेशन वगैरह के ऊपर कुछ नहीं सोचना है आपको, आपको मेरे से कनेक्ट करना है, आप मेरे को लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है सौरभ कोठारी के नाम से, ठीक है। हर साल ऐसा जरूर होता है, लगता है यार हम लोगों ने पढ़ा लिया, काम खत्म हुआ, बट यार अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि एक साल हर दिन 2 घंटे में आप लोगों के साथ, 3 घंटे में आप लोगों के साथ बैठा हूँ, तो लगता है कि यार वो एफर्ट है। रिजल्ट आप में से कुछ लोग के आएंगे, कुछ लोग के नहीं आएंगे, कुछ लोग अभी बहुत खुश होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना यार, आप ये कैट का एग्जाम ना आपको आईएम पहुंचाएं कि ना पहुंचाएं, लेकिन मेहनत करना सिखा देगा लाइफ में। मैं सच बता रहा हूँ आपकी ये चीज कि हो सकता है आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में ना पहुंच पाओ, बट लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, और वो डिसिप्लिन ना आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। मेरी कैट की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पता है इनटेक क्या था? मैं जब कॉलेज के सेकंड ईयर में कैट की तैयारी करता था ना, मैं डेली सुबह 4 बजे उठता था, मेरा 9 बजे कॉलेज होता था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है सुखदेव कॉलेज, वहां से मैंने अपनी बीएमएस किया था, तो मुझे ना डेली वो सुबह ना 4 बजे उठ के पढ़ने की हैबिट हो गई थी, नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हैबिट हो गई थी पढ़ने की। और उस वजह से ना लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, और वो डिसिप्लिन ऐसा आया कि आज तक नहीं गया। काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। तो ये एग्जाम ना आपको तैयार कर रहा है आपकी लाइफ के लिए। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप अच्छे कॉलेज चले जाओगे, वेल एंड गुड है। नहीं भी जा पाओगे ना, यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू विल बी वेरी पम्प्ड अप, यू विल बी वेरी मोटिवेटेड। यार ये मैंने उस एग्जाम की तैयारी की थी जब मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट था, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेन, गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, आर यू एबल टू रिलेट? ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे, सर्च कर पाओगे, देख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो बच्चा मेरे से कुछ और पूछना चाहता है, ये मैंने आपको लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा दी, कुछ बच्चे सर्च नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ऑलवेज सर्च मी, यू कैन जस्ट टाइप माय नेम एंड यू कैन सी, ठीक है। सो बहुत वो नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। हमने बहुत मेहनत करी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो वो मेहनत हमने करी है, जो आपने जो करी है मेहनत, देखो किसी भी बच्चे का जो रिजल्ट आता है ना, उसमें कोचिंग का सिर्फ 20% रोल होता है। हम कोचिंग वाले यार क्या कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ गाइड ही तो कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको ही है, ठीक है। तो वो पढ़ना आपको है, हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्शन दे दें। उस डायरेक्शन के बाद अगर आप मुझे बोलोगे कि यार नहीं, कोचिंग में आपको जो रिजल्ट है, यार ये जो बच्चा है इसमें इन्हीं की तो मेहनत है, हम लोगों ने क्या किया, हमने बस पढ़ा दिया, कंटेंट दे दिया, बट उनके अंदर वो जील थी कि मुझे करना है, अपने लिए करना है। अगर आप उस चीज के लिए तैयार हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू टॉप कॉलेज। ठीक है, आई विश यू ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग कनेक्टेड रहो, स्टडी बस का आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड with this, let's meet up somewhere sometime. I hope I receive a message from you very soon that sir, we got this percentile,
एंड आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर स्कैट नहीं तो जैट, जैट नहीं तो एनमैट, एनमैट नहीं तो स्नैप, स्नैप नहीं तो आईएफटी, आईएफटी नहीं तो सीमैट, सीमैट नहीं तो टेस्ट, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल, गुड लक फॉर कैट एग्जाम एंड चलो बाय। ठीक है, तो अब अगले 10 दिन मेहनत करो अच्छे से लग के। एंड फाइनली दिस इज योर फेवरेट क्वेश्चन, द थैंक यू क्वेश्चन, जिसका आप लोग हमेशा वेट करते हो, शायद आखिरी बार देख रहे हो थैंक यू क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब लग के मेहनत करनी है यार। 10 दिन अपने आप को प्राउड कराना है, फील अपने आप को प्राउड फील कराना है। ठीक है, खुद को सेल्फ प्राउड फील कराना है, अपने लिए करना है अगले 10 दिन, सिर्फ खुद के लिए कि यार मुझे अपनी मेहनत करनी है और अपने लिए मैं कुछ अचीव करना है। एंड आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे, ऐसे मैं कितना बोल लेता हूँ बट आज ठीक है, यू अंडरस्टैंड राइट। so just do your best, just give your best shot and I'm sure you all will crack it. ठीक है, good night to all, sweet dreams, all the very best, and just land up in your dream B school. With this, signing off for 2022, my name is Saurabh Kothari. Take care, all the best.